Good evening to all the students. We are back with LVRC, that is revisionary classes for CA Inter FM. In our yesterday's session, we quickly revised through all the concepts of investment decision and dividend decisions. We also took a couple of practical problems from RTP September 2026. Today, being Sunday evening, today we would learn or not learn, rather, instead, we would quickly revise the concepts of management of working capital chapter. Again, a lengthy chapter. It consists of various small components, small concepts जो हमें quickly आज revise करना है. And if time permits, we will take practical problem from RTP September 2026 and so on. ठीक है? So I know today is Sunday evening, but let's enjoy Sunday evening through learnings. Let me just share my screen with you all. Okay, I hope my screen is visible. Yeah, okay. So, first of all, let's understand the meaning of working capital. What have we learned? What does working capital mean? So, in a very simple term, working capital is the money, the capital, the funds that you need for running day to day business operation. ठीक है, रोजिंदा बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट वाज वर्किंग कैपिटल. Again, fixed assets in the business cannot work on its own. If you are planning to start a manufacturing unit, सिर्फ मशीन लगा देने से, फैक्ट्री बिल्डिंग सेटअप कर देने से, ऑफिस स्ट्रक्चर सेटअप कर देने से, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सेटअप करने से मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा. यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन, फिक्स्ड असेट इज इंस्टॉल, बट उससे बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा. डेली बिजनेस चलाने के लिए यू वुड नीड रॉ मटेरियल्स, यू वुड नीड सम लेबर टू वर्क ऑन इट. सो दैट मनी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ फिक्स्ड असेट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. ठीक है. सो नंबर वन लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर वॉज एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड. ये रोजिंदा बिजनेस चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, दैट वी हैड लर्न इन दिस चैप्टर. एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड. फिर वी अंडरस्टूड, वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, वो भी हमने लाइव वर्चुअल क्लासेस में सीखा हुआ है इन डिटेल. आज उसका रिवीजन करेंगे. देन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन इट्स डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, एक बार आपने एस्टिमेट कर लिया कि लेट से आई वुड नीड 5 लाख ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द नेक्स्ट ईयर, तो हाउ वुड यू अरेंज दिस 5 लाख, वो हम फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट से सीखेंगे या रिवाइज करेंगे. सीख तो लिया है, आज सब रिवीजन होगा. ठीक है. Then moving to specific components of working capital. We know that working capital is nothing but current asset less current liabilities. तो current asset के specific components को कैसे मैनेज करना है, वो आज हम रिवाइज करेंगे. करंट लायबिलिटी के स्पेसिफिक कंपोनेंट को कैसे मैनेज करना है, वो भी आज हम रिवाइज करेंगे. सो कैन आई से फर्दर, to manage specific components of working capital, we would need to understand the concept of receivables management. A receivables means यार debtors हो गया. We will understand cash and treasury management. ये कैश कंपोनेंट की बात हो गई यहाँ पे. ठीक है. Then we have inventory management. स्टॉक की बात हो गई यहाँ पे. Inventory management, but it is already covered in your
costing paper, CMA paper. So yeah, we will not revise because it is in detail covered in costing paper under the chapter head material costing. ठीक है. So ये आज हम रिवाइज नहीं करेंगे. It is covered under CMA costing paper. Last but not the least, payables management. So यहाँ पे क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज करना है उसकी बातें होंगी. So all the specific components of current assets and current liabilities would be covered. ठीक है. बट पहले फर्स्ट लर्न हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल, फिर उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में जाओ. ठीक है. सो लेट्स जस्ट क्विकली start with our revision by first taking the concept of or revising the concept of estimating the working capital. We know that, sir, working capital is nothing but करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज. मतलब इन शॉर्ट हमें सारे करंट असेट के कंपोनेंट्स की वैल्यू ढूंढनी है. लाइकवाइज हमें सारे करंट लायबिलिटीज के कंपोनेंट्स की वैल्यू ढूंढनी है. इफ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट असेट कंपोनेंट्स, करंट असेट लाइन आइटम्स and current liability line items, our job is done. Working capital is nothing but CA minus CL. So उसमें let's just quickly revise the format, the statement of working capital. Estimation of working capital. ठीक है. Ideally मोटा मोटी working capital क्या है? It is nothing but current assets less current liabilities. ठीक है. दिस इज द मोटा मोटी स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स आई व्यू स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट. अब आप करंट असेट के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में जाओ. करंट असेट्स वुड स्पेसिफिकली और द जनरल लाइन आइटम्स दैट यू विल सी इन ऑल द बिजनेसेस. स्टॉक दिखेगा, डेटर्स दिखेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस दिखेगा. ये तीन जनरल लाइन आइटम्स है दैट यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस. एंड इफ यू रिमेंबर, इस चैप्टर के कुछ असम्पशंस थे, सम स्टैंडर्ड, सम डिफॉल्ट असम्पशंस. assumption number 1 was all activities accrue evenly throughout the year. Means all the transactions are spread evenly throughout the year. Accrue evenly throughout the year. It means अगर मान लो पूरे साल का सेल्स इज 12 लाख, तो जैन में सेल्स 1 लाख होगा, मार्च में देखोगे तो सेल्स 1 लाख ही होगा, अक्टूबर में जाओगे तो देखोगे तो सेल्स 1 लाख ही होगा. अंडरस्टूड? दिस इज द स्टैंडर्ड डिफॉल्ट assumption of working capital chapter. All activities, be it stock, be it purchases, be it expenses, all activities accrue evenly throughout the year unless otherwise specified. ठीक है. नंबर 2, हम इस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट्स का एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करेंगे. कौन से इंडस्ट्री का करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है. सो द जनरल लाइन आइटम्स दैट यू विल सी इन द बैलेंस शीट ऑफ करंट असेट्स, the general line items that you will see under current assets of manufacturing units balance sheet. तो उसमें स्टॉक होगा, स्टॉक दिखेगा ही दिखेगा. Then we will see debtors, we will see cash and bank balance, we will see some other current as well as other current assets as well as other current assets also, जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब अदर करंट असेट्स में आएंगे. ठीक है. अगर हो तो लिखने का, नहीं हो तो नहीं लिखने का. ठीक है. एंड अंडर करंट लायबिलिटीज जनरल लाइन आइटम वुड बी क्रेडिटर्स, यानी कि ट्रेड पेएबल्स, वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे. अपार्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स देयर वुड बी अदर करंट लायबिलिटीज. उसमें सारे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, बैंक ओडी वगैरह आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह आ जाएगा. ठीक है. सो इफ यू डिडक्ट करंट लायबिलिटी फ्रॉम करंट असेट, द रिजल्टेंट अमाउंट is technically called as excess of current assets over current liabilities. फिर इसमें हम सेफ्टी मार्जिन ऐड करते हैं.
safety margin is generally added to be on conservative basis. Why? Because हम यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं, तो हमने जो भी अमाउंट हम ढूंढेंगे ना, दैट वुड बी एन एस्टिमेटेड अमाउंट, दैट वुड नॉट बी एन अक्यूरेट अमाउंट, दैट वुड नॉट बी 100% श्योरिटी वाला अमाउंट, ठीक है. सो टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड वी एड सम safety margin, we add some provision for contingency, and we get our net working capital required. This is the format that we had learned for the estimation of working capital. ठीक है. फिर हमने सीखा था सर ये फॉर्मेट तो बना दिया, बट ये फॉर्मेट हम फिलअप कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट से करेंगे, विच सोर्स डॉक्यूमेंट विल हेल्प अस इन फिलिंग अप द वैल्यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो हमने देखा सर उसके लिए हमने सीखा था कि सर उसके लिए हमें कॉस्ट शीट बोलो, इनकम स्टेटमेंट बोलो, कॉस्ट समरी बोलो, वहां से हमें ये सारी वैल्यूज फिलअप करनी है. इन्वेंट्री, फिर डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारी वैल्यूज का सोर्स डॉक्यूमेंट कहां से आएगा, तो कॉस्ट शीट, कॉस्ट समरी से आएगा. ठीक है. ओके. इन्वेंट्री में कैन आई से देयर वुड बी आरएम स्टॉक, बिकॉज वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो आरएम इन्वेंट्री कुछ होगा, कुछ इन्वेंट्री वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यूआईपी, and there would be कुछ stock in the form of finished goods. ठीक है. So inventory में RM, WIP, FG. Clear? And इसका source document, the values that we will derive from which source document? So the source document will be our cost summary. तो अगर आपको याद हो तो we used to prepare cost शीट बोलो या इनकम स्टेटमेंट बोलो. ठीक है. कॉस्ट शीट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ठीक है. द रिजल्टेंट फिगर was called as, either you call it as gross factory cost, either you call it as cost of production, either you call it as COGS. It was same under FM. The logic behind that was all activities accrue evenly throughout the year. ये standard assumption हम follow कर रहे हैं unless otherwise specified. अब ये standard assumption में कहने से opening stock, be it RM, be it FG, be it WIP, और closing stock, be it RM, be it WIP, be it FG, दोनों same होता था. Are you following? Because of that, because of opening inventory and closing inventory being same, cost of production, COGS, factory cost was coming same. ठीक है. So यहाँ पे आप cost of production, हाँ, unless otherwise specified, there were many illustrations. उसमें से हमने एक illustration ऐसा भी देखा था जहाँ पे standard assumption of all activities accrue evenly throughout the year was not holding true as far as inventory was concerned. तो उस situation में क्या करना है, we have already learned. ठीक है. So cost of production, COGS. इसमें हम एडमिन एक्सपेंस ऐड करते थे. ये एडमिन एक्सपेंस आर those admin expense which are not related to production. अगर एडमिन एक्सपेंस आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ये यहाँ इंक्लूड हो जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स. क्लियर. सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. क्या दे हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समवेयर गिवन द हिंट कि admin expense is a part of production overheads? If yes, then you consider under cost of production. ठीक है. वो cost of production में include हो जाएगा. But in absence of any information, we will assume कि admin expense is a general admin expense. It is not related to production. फिर हम selling expense add करते थे and we used to get cost of sales. Cost of sales में we used to add profit and we get the sales amount. ठीक है. So at the end, this cost summary या cost statement is nothing but your income statement. Cost की सारी details आई और at the end sales की भी details आ रही है. So it is nothing but you term it as income statement, cost statement. It is one and the same.
ठीक है. If you students, if you recollect, working capital can be estimated using two methods. One is using total approach या total basis. One is cash cost basis. What was the difference between total basis and cash cost basis, students? सो टोटल बेसिस में हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं, हम प्रॉफिट को भी इंक्लूड करते हैं. सर ये तो समझ गया, बट प्रॉफिट को इंक्लूड करके उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या? सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज दैट, अल्टीमेट लर्निंग, अल्टीमेट कंक्लूजन वाज दैट कि इफ यू फॉलो टोटल बेसिस मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल, योर फिनिश्ड गुड्स will be based on COGS, correct? Your WIP will be based on cost of production, correct? So let's for the time being assume under factory overheads there is depreciation related to machinery वगैरह. So वो भी factory overheads में आएगा, and there are other cash factory cost. So in short, factory overheads have two bifurcation. One is depreciation, one is other than depreciation वाले overheads. So if you follow total basis, students, रॉ मटेरियल को हमें इंक्लूड करना है अंडर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अंडर सीओजीएस एज वेल. वेजेस को भी हम इंक्लूड करेंगे, डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करेंगे, कैश फैक्ट्री कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे टू फाइंड सीओजीएस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सारे इन शॉर्ट सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड टू कैलकुलेट सीओजीएस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे एंड सेल्स भी इंक्लूड करेंगे. सो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, if you follow total basis, then your COGS, cost of production, will include depreciation cost, and your debtors, your trade receivables will be based on sales. Following everyone, this was the situation under टोटल बेसिस अप्रोच. ठीक है, डेटर्स को आप वैल्यू करोगे सेल्स में, डेप्रिसिएशन आप इंक्लूड करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सीओजीएस में. बट ऑन द कॉन्ट्रारी स्टूडेंट्स, इफ यू फॉलो कैश कॉस्ट बेसिस, इट मींस सबसे पहले तो हमें सारे कॉस्ट ही लेने हैं. बाय द नेम इटसेल्फ, नेम इज ओनली सजेस्टिंग कि भाई सारे कॉस्ट ही लेना है. सो इन अदर वर्ड्स, प्रॉफिट विल बी एक्सक्लूडेड. If profit gets excluded, sales will get excluded. Are you following? So it means debtors will be valued on cost of sales instead of sales amount. Okay? This is the only change. Not the only change, but one change between total basis and cash cost basis. Okay. दूसरा, again नाम में ही है, take only those costs which are paid or payable in cash. आज नहीं तो कल जो एक्सपेंस कैश और बैंक से आप चुका सकते हो वही सारे कॉस्ट लेने. ठीक है, सो कहना इसे रॉ मटेरियल आज नहीं तो कल वी विल पे इन कैश, इट इज इंक्लूडेड. सेम फॉर वेजेस, बट यस डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस. वो आपके जेब से आज नहीं तो कल कोई भी रुपया नहीं जाने वाला है. अंडरस्टूड? सो डेप्रिसिएशन गेट्स एक्सक्लूडेड अंडर कैश कॉस्ट बेसिस. Cash factory cost will be included. So can I say to calculate cost of production or COGS, depreciation will be excluded if you follow cash cost basis. Clear everyone? हाँ, एडमिन सेलिंग आज नहीं तो कल कैश में भरेंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट टू बी एक्सक्लूडेड बिकॉज सारे कॉस्ट ही लेना है, प्रॉफिट को तो इग्नोर करना है. ठीक है, सो debtors will be valued on cost of sales. And students, we have also learned कि यार सर ये बराबर है, लॉजिकल है. Working capital in layman or in a very general term, it means the amount blocked in your current assets and current liabilities. तो सर डेटर्स में तो आइडियली मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स ही ब्लॉक होगा. हाँ, डेटर्स को द वैल्यू that I would receive from debtors would be sales amount. But can I say this sales amount includes the element of profit as well? So profit में ideally मेरा कोई पैसा ब्लॉक नहीं हुआ है. पैसा ब्लॉक कौन सा बोल सकते हैं? The amount that you have paid from your pocket. That is ideally termed as the amount blocked.
Understanding? So profit is something over and above that you have paid. So that cannot be termed or regarded as amount block. Understanding? So that's why we value debtors on sales. Understood? Cash cost basis, total basis. Clear everyone? Okay. ठीक है फिर let's just quickly revise. I have explained the illustration one that I have taken in my live virtual classes. I have explained the formulas of all the components of current assets and current liabilities with logical explanation. ठीक है फॉर्मूला कैसे बनी है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से फिर मैंने फॉर्मूला लिखवाई थी बट टुडे वी विल जस्ट क्विकली रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ठीक है तो अब students come to your original format. I guess you have also written during live virtual classes. So RM की formula क्या थी students? It was nothing but raw material consumed into RM holding period divided by 365 1252. Clear? I hope you all are able to recollect this formula. ठीक है अब WIP में ए वर्क इन प्रोग्रेस देयर इज समथिंग अंडर प्रोसेस अंडर प्रोडक्शन तो कहना इसे प्रोसेस में मैंने रॉ मटेरियल डाला होगा यस और नो सो दिस रॉ मटेरियल इज इन WIP क्लियर फिर उसी WIP में लेबर लोग काम कर रहे होंगे देयर वुड बी सम अदर ओवरहेड्स एज वेल सो WIP में यू विल सी ऑल द कंपोनेंट्स बिकॉज इट इज अंडर प्रोसेस सारे कॉस्ट एक साथ काम कर रहे हैं ठीक है सो रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 365 1252 क्लियर वेजेस इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 365 1252 सर ये 1252 क्या है इफ यू वांट योर आंसर इन डेज टेक 365 want your answer in months take 12 and want your answer in weeks take 52 clear everyone likewise for overheads as well overheads into WIP holding period divided by 365 1252 ठीक है but students if you remember work in progress is unfinished goods it is not 100% complete in all aspects let's say example of shirt. So if complete shirt with packaging is ready, that is called as finished goods. But let's say there is still some work left. For example, button stitch karna baki hai. Yeah, this sleeve is left. So can I say that is work under process, under production? So can I say it is not 100% complete? So if you remember WIP ke liye we used to multiply it with percentage completion. Are you following? And the standard assumption or the standard rule, if nothing is given in the question is 100, 50, 50. ठीक है 100% of raw material means शर्ट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो 100% हमने प्रोसेस में डाल दिया है दिस इज व्हाट हाउ यू इंटरप्रेट फिर ये शर्ट बनाने के लिए वेजेस और ओवरहेड्स जो लगता है उन्होंने 50% काम किया है ठीक है 50% वेजेस मींस 50% लेबर को और मेहनत करनी है एंड खर्चे और 50% होने बाकी है इसमें क्लियर दैट इज व्हाट 100% कंप्लीशन मींस एवरीवन अंडरस्टूड ठीक है फिर हम आते थे FG में FG इज बेस्ड ऑन COGS सो COGS into FG holding period divided by 365 1252 students since this is looking messy but I hope you are able to understand you are able to recollect the formula कि FG कैसे कैलकुलेट होता था COGS into FG holding period divided by 365 1252 and FG is 100% complete so हम 100% से मल्टीप्लाई करते थे बट लिखते नहीं थे इफ यू रिमेंबर ठीक है अगर ये लिखो ना लिखो आंसर वुड रिमेन सेम हम एट द एंड ऑन द बैक एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 100% बट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी ठीक है सो दिस वाज हाउ वी कैलकुलेट FG फिर डेटर्स if you follow debtors on total basis if you estimate working capital on total basis method then your debtors will be based on sales
तो इफ यू रिमेंबर इफ यू रिकलेक्ट द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या थी? सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 1252, ठीक है? एंड इफ यू फॉलो कैश कॉस्ट बेसिस, so can I say debtors will be based on cost of sales instead of sales, ठीक है? So cost of sales into average collection period divided by 365 1252. Cash bank balance was already given, is already given in the question. Other current assets में generally prepaid expense वगैरह आएगा. So it would be expense amount into the prepaid period divided by 365 1252. Clear? Likewise, current liability में creditors. So creditors are based on credit purchases. अच्छा, डेटर्स के लिए क्रेडिट सेल्स लेना है. डेटर्स का जन्म ही क्रेडिट सेल्स से होगा, ठीक है? क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिट परचेजेस इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड डिवाइड बाय 365 1252. क्लियर एवरीवन? क्रेडिट परचेजेस लेने हैं. अंडरस्टूड? लाइकवाइज अदर करंट लायबिलिटीज में जनरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज्यादातर आते हैं. सो हाउ टू कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? It is nothing but expenses, that respective expenses का amount multiply by lag period. Lag means outstanding period divided by 365 1252. ठीक है? So I just quickly revised all the formulas for the components of current assets and current liabilities. अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये फॉर्मूला किस लॉजिक से बनी हुई है, यू कैन रेफर माय LVC लाइव वर्चुअल क्लासेस का रिकॉर्डिंग, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. क्लियर एवरीवन? मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी लर्नड वाज वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. Working capital operating cycle. The meaning of working capital operating cycle is it is a process of converting cash back into cash. ठीक है? आज मैंने कैश जेब से निकाला, वही कैश वापस लाने की प्रोसेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश बैक इनटू कैश. ठीक है? यहाँ पे हम कैश बनाने की फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, मींस जहां पे कैश बनता है उस फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे. कैश conversion of cash to cash means the cash that I pay to supplier. सप्लायर को मैं कैश क्यों दूंगा? डोनेट करने के लिए कि रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए? सो ऑब्वियसली सर वी विल पे टू सप्लायर टू बाय रॉ मटेरियल्स. And this cash is nothing but the cash that you receive from your customer. ठीक है? कस्टमर को आपने जो सेल्स किया है वो सेल्स का पैसा जब मिलेगा, दैट कैश हियर वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है? सो इट इज अ सिंपल प्रोसेस टू कन्वर्ट कैश बैक इनटू कैश. ये कैश बनाने की फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे. अ सिंपल टर्म, लेट्स से आज रॉ मटेरियल खरीदा. For that I need some cash, so I paid to the supplier. I bought raw materials. I will enter this raw material into the process. Process चालू है, प्रोडक्शन चालू है. WIP से FG बनेगा. ठीक है? FG से I will sell it to my customers. कस्टमर से पैसा मिलेगा एंड वो पैसों से वापस आई विल बाय रॉ मटेरियल एंड दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल द टाइम यू रन द बिजनेस. जब तक है जान या जब तक आपकी ताकत है बिजनेस रन करने की, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी. ठीक है? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश बैक इनटू कैश. कैश देखो पहले कहा जा रहा है रॉ मटेरियल में, वापस कहां से आ रहा है? डेटर से आ रहा है. ठीक है? सो दिस एंटायर साइकिल, एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल.
अब ये साइकिल को कंप्लीट करने में, ये पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, और नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अंडरस्टूड एवरीवन? ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है। सो आज मैंने मेरे एक जेब से एक पैसा निकाला टू बाय रॉ मटेरियल। वही पैसा रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी में, डब्ल्यूआईपी में से एफजी में, एफजी में से सेल्स में, सेल्स में से डेटर्स, डेटर्स में से कैश। वही पैसा मान लो 75 डेज के बाद आता है। ठीक है, विथ प्रॉफिट। सो दिस 75 डेज इज कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर? And if you remember, students, the formula to calculate operating cycle period was, the formula to calculate net operating cycle period was RM holding period. HP means holding period, a storage period, plus WIP holding period. Not the amount of WIP, but the holding period ka figure. That would be in months, days or weeks. ठीक है? Plus FG holding period, plus average collection period from debtors, and less average payment period to creditors or suppliers. So this was how we calculate net operating cycle period. Clear everyone? अच्छा, फिर if you remember students, कुछ क्वेश्चन में ये होल्डिंग पीरियड डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, बट देयर वर फ्यू और अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जहां पे होल्डिंग पीरियड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। दे हैड गिवन सम डेटा टू यू। सो उस डेटा से, उस डेटा को गैदर करके हमने पहले होल्डिंग पीरियड, सारे होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करे, एंड देन वी अप्लाइड द होल्डिंग पीरियड्स in the formula of net operating cycle. Understood everyone? So अगर holding period directly available नहीं है, तो students you already know how to calculate RM holding period. How to calculate RM holding period? Can anyone tell me? It is nothing but average stock of raw material divided by raw material consumed into 365, 12, 52. ठीक है? So raw material holding period is first of all dependent on the stock of RM, and RM stock is definitely, is obviously based on raw material consumption. ठीक है? Into 365, 12, 52. इसका logical explanation of the formula you can refer to my LVC classes for this chapter, for this chapter where we covered ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का कॉन्सेप्ट। ठीक है? लाइकवाइज WIP होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ WIP स्टॉक डिवाइडेड बाय, कैन आई से WIP, जैसे रॉ मटेरियल इज बेस्ड ऑन इट्स कंजम्पशन, फिनिश गुड्स इज बेस्ड ऑन गुड्स सोल्ड का कॉस्ट। Similarly, WIP is based on cost of production process into 365, 12, 52. ठीक है? Likewise, हमने सीखा था formula for FG holding period. It was nothing but average FG stock divided by goods sold. ये कौन सा गुड्स हम एक्चुअल में बेचेंगे? ऑब्वियसली वही गुड्स जो फिनिश्ड है इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई वी टेक COGS, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है? इनटू 365, 12, 52. आई होप यू नो द लॉजिक बिहाइंड 12 एंड 52. डेज में आंसर चाहिए तो 365, मंथ्स में चाहिए तो 12 एंड वीक्स में चाहिए तो 52. फिर वैसे हमने ACP की फॉर्मूला देखी थी। इट इज नथिंग बट एवरेज डेटर्स upon net credit sales into 365,
1252. And if you recollect this formula, you have already learned in financial ratios chapter as well. ठीक है, उसमें भी ये फॉर्मूला आती थी. एपीपी, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज क्रेडिटर्स upon net credit purchases into 365, 1252. Clear everyone? So if holding periods are not specifically given in the question, we have learned how to calculate holding periods. And once the holding periods are calculated, you simply apply in the formula of net operating cycle period. Okay? And net operating cycle period, let's say for the time being, just a random assumption, it comes to a net operating cycle period. It comes to 90 days. तो स्टूडेंट्स ये 90 डेज को इंटरप्रेट कैसे करना है? सो इंटरप्रेट ऐसे करना है कि सर अगर आज पैसा जेब से निकल रहा है टू पे द सप्लायर फॉर द गुड्स दैट आई हैव बॉट फ्रॉम हिम, यही पैसा घूमते कस्टमर से आफ्टर 90 डेज मुझे मिलेंगे. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? एक कस्टमर का क्रेडिट पीरियड 90 डेज ऐसा नहीं, घूमते घूमते सब एवरीथिंग. फर्स्ट द कैश took the form of RM took the form of WIP took the form of FG took the form of sales took the form of customers took the form of cash again. ठीक है, सो ये घूमते साइकिल चलाते हम कितने दिन के लिए चलाएंगे? 90 डेज के लिए. क्लियर एवरीवन? ला टूर द फ्रांस 90 डेज का इवेंट होता है. ठीक है, सो 90 डेज, सो वन साइकिल is for 90 days. Means ideally अगर लेमन पर्सपेक्टिव से सोचे तो you have to arrange the funds for 90 days for smooth running of business. Once you arrange the funds for 90 days, ये साइकिल फिर रोटेशन ही होने वाला है. 90 डेज के बाद डेटर से पैसा मिला, वही पैसे से आप रॉ मटेरियल्स खरीदोगे. Again this cycle will go on and on and on. So your task as a financial manager is to arrange the funds smoothly for 90 days. If you manage to arrange the funds for 90 days, your business will operate smoothly. ठीक है, सो एक साइकिल को कंप्लीट होने में 90 डेज. सो नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर कितनी होगी? एक साइकिल को कंप्लीट होने में 90 डेज लगता है, तो पूरे साल में अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर, तो 4 साइकिल होगी. मींस ऐसे हम 4 बार साइकिल चलाएंगे वर्किंग कैपिटल की. अंडरस्टूड? अगर इफ यू आर कैलकुलेटिंग इन मंथ्स, तो 12 डिवाइड बाय 90 डेज मींस 3 मंथ्स. अगेन 4 साइकिल्स. क्लियर? वैसे आप वीक में भी कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. सर हमने वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए उसका एस्टिमेशन तो कर लिया, बट अब यही एस्टिमेटेड अमाउंट कौन से सोर्सेस से अरेंज करें? क्लियर? दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो स्टूडेंट्स, इफ यू रिकलेक्ट, आई हैड एक्सप्लेन्ड दैट वर्किंग कैपिटल ideally is categorized into 2 types. Something called as permanent working capital required, something called as temporary working capital required. So finance scholars are of the general view that your permanent working capital ideally you should raise from long term sources, because permanent working capital is fixed working capital that will remain in your business till the end of the business life. Clear? So finance scholar का ये जनरल व्यू है कि आप उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करो, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए. अंडरस्टूड? हाँ, बट अगेन स्पेसिफिक व्यूज डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. क्लियर? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस स्कॉलर्स आर ऑफ द जनरल व्यू you should arrange from short-term sources of finance. If you students recollect, I gave you the example of
बिजनेस ऑफ रनिंग आइसक्रीम पार्लर. तो आइसक्रीम पार्लर is my normal whole time, full time business. Okay. So can I say there would be some amount of inventory, some value of ice creams that I need to keep at any given point in time. उतना तो रखना ही पड़ेगा inventory. So that is called as permanent working capital. The working capital that you need throughout the life of business cycle. Okay. But let's say during hot and peak summers, my ice cream sales would increase. So I would need to keep more stock of ice creams, more inventory of ice creams. So during that temporary seasonal period of 2 and 3 months of hot summer time, my working capital required would be high. Okay? So that is temporary working capital. Capital that is needed for short period of time, for temporary period of time. So finance scholars are of the general view कि उसको आप short term sources से raise करो because वो short period के लिए required है. एक बार summer season खत्म तो monsoon में again your normal sales of ice cream would happen. Clear everyone. फिर gold jewelry business का भी example दिया था. During Diwali season, the business of gold, especially during Dashera, especially during Dhanteras, it is very high because so during that Diwali phase, during that Diwali season, you would have to keep more stock of inventory. Okay, so more working capital would be temporarily needed during that Diwali ka time. So raise that from short-term sources. This is the general view of finance scholar. Again, specific views. I told you, FM is very subjective. It has to be looked from multiple factors, from multiple facets. Understanding, everyone? So this is permanent working capital ka timeline. You require at any given point in time, fixed capital at any given point in time required in the business. चाहिए ही चाहिए. And this is temporary working capital over and above permanent working capital. ठीक है? Something that you need additional during that seasonal period. So this was about financing of working capital. Clear everyone? I hope students you are able to revise, recollect all the concepts that we have learned in our regular classes. Still, if you have any queries, feel free to send your queries to Board of Studies through email or through Telegram link. Okay, whatever way you are comfortable with. Moving ahead, so we quickly revised in the first 45 minutes. What have we revised? Estimation of working capital, how to estimate the working capital using working capital estimation statement, cost sheet का statement देखा, ठीक है. फिर द वैल्यूज ऑफ ईच कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे डिराइव होगी, कौन से फॉर्मूला से मिलेगी, वो हमने देखा. सेकेंड, वी लर्न व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. थर्ड, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट ईच components holding period. Fourth, we also learned how to finance the working capital required. Clear everyone? Now students, we will take one specific components जैसे कि receivables management, तो उसकी सारी बातें करेंगे. फिर कैश मैनेजमेंट उठाएंगे, उसकी सारी बातें करेंगे. पेबल्स मैनेजमेंट उठाएंगे, उसकी सारी बातें करेंगे. ठीक है. So let's now quickly take the component of debtors and let's quickly revise receivables management chapter. Students, इस चैप्टर में इफ यू रिमेंबर देयर वर टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव. लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज और क्रेडिट पीरियड गिवन टू द कस्टमर्स and selecting the best one. So learning objective number 1 was कि सर अंडर दिस ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हमने ये सीखा था कि मान लेते हैं कि डेटर्स को अगर 30 डेज का क्रेडिट दे,
अगर 60 डेज का क्रेडिट दे, अगर 90 डेज का क्रेडिट दे, 45 डेज का क्रेडिट दे, बेस्ट क्रेडिट पीरियड कौन सा अमंग्स द ऑल? This was learning objective number one. Evaluation of different of multiple credit periods. Selecting the best one. हमारा बेस्ट वन कौन सा होगा? ऑब्वियसली जिस क्रेडिट पॉलिसी में, जिस क्रेडिट पीरियड में हमारा सबसे ज्यादा फायदा हो एज अ कंपनी, वी विल सिलेक्ट दैट. So remember students, we used to calculate net benefit under learning objective number one. Net benefit कैसे calculate करते थे? So ideally it was nothing but gross benefit less risk or the cost that comes with credit sales. Clear? So the format was sales less variable cost, contribution less fixed cost, operating profit. फिर वी यूज टू सब्ट्रैक्ट. सी क्रेडिट सेल्स के कुछ फायदे हैं, कुछ रिस्क है, कुछ नुकसान है. तो ये सारे फायदे हो गए. क्रेडिट सेल्स से आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, दैट इज योर बेनिफिट, ग्रॉस बेनिफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स. बट क्रेडिट सेल्स कम्स विद सम कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट वाज ABCD COCD. I hope students you are able to recollect what was ABCD COCD. A was nothing but admin cost to manage your debtors. Bad debts, कुछ debtors पैसे नहीं देते थे. There were some collection cost happening as well because debtors है, वसूली करने जाना पड़ेगा. So there was some collection cost incurred as well. And if debtors pay early, तो उनको डिस्काउंटिंग भी देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा. सो डिस्काउंटिंग कॉस्ट. ठीक है. सीओसीडी वॉज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. ठीक है. डेटर्स को उठाने का खर्चा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? द रिजल्टेंट फिगर was termed as net benefit before tax. इसमें से आप टैक्स माइनस कर दो तो यू गेट नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स. क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज द फॉर्मेट टू इवैल्यूएट different credit policies, selecting the best one. जिस क्रेडिट पीरियड में नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स सबसे ज्यादा, वी यूज टू सिलेक्ट दैट. ठीक है सर, एक बार क्विकली हमें समझा दो ना सीओसीडी क्या था. सीओसीडी का फुल फॉर्म इज कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स. ठीक है. Now, what was that? Let me just quickly go through that concept, COCD wala. Students, let's say my credit sales is rupees 12 lakh per annum. ठीक है. My normal credit period, my average collection period is 30 days. Assuming 360 days in a year, can I say assuming 360 days in a year, can I say my debtors would be how much? 12 lakh into 30 by 360. Yes or no? Means 1 lakh. Okay. Before calculating debtors, if the sales in the entire year is 12 lakh, so can I say sales in Jan would be 1 lakh? Feb में 1 लाख का सेल हुआ होगा, अप्रैल में 1 लाख का सेल हुआ होगा, नवंबर में 1 लाख का हुआ होगा, बिकॉज ऑल एक्टिविटीज अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर. सो लेट्स अज्यूम माई सेल्स इन जैन टू बी 1 lakh, and for the time being assuming I sold goods on 1st of Jan worth rupees 1 lakh. पहली तारीख को गुड्स बेच दिया. ठीक है. सो जैन का 1 लाख सेल्स डन. इसका पैसा कब आएगा? 30 दिन बाद आएगा. सो ऑन Jan 31st I would receive the payment. Okay, so sir, in short,
अगर हम मोटा मोटी देखें, आज आपका 1 लाख का सेल हुआ, उसका पैसा 30 दिन बाद आएगा, इट मीन्स योर अमाउंट इज गेटिंग ब्लॉक्ड फॉर 30 days. यस और नो स्टूडेंट्स? ठीक है, बट नो, हे वेट, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इवन अ सिंगल रुपी टू बी ब्लॉक्ड फॉर इवन अ सिंगल डे. आर यू फॉलोइंग? 1 रुपया भी बिजनेस में ब्लॉक हो वो मुझे परवड़ेगा नहीं. आई कैन नॉट अफोर्ड दिस अमाउंट गेटिंग ब्लॉक्ड. आर यू फॉलोइंग? इवन फॉर अ सिंगल डे. सो व्हाट आई हैव टू डू? सर बट ये ब्लॉक तो होने वाला है बिकॉज डेटर विल नॉट गिव बिफोर 30 days. सो व्हाट option I have? Can I say I have to arrange these funds for 30 days from somewhere else now? Yes or no? Because I cannot afford इवन अ सिंगल रूपी टू गेट ब्लॉक्ड. ठीक है, सो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 30 दिन के लिए ब्लॉक तो हो रहा है, सो मुझे कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा. सो व्हाट आर द प्राइमरी टू सोर्सेज टू अरेंज द कैपिटल? कैन आई से इट इज आइदर यू इन्वेस्ट योर ओन फंड्स और आइदर यू बोरो फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, सो बोरोड फंड हो सकता है या ओन फंड हो सकता है, ये दो सोर्सेज से हम फंड अरेंज करते हैं. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम if we borrow 1 lakh rupees for 30 days at some rate of interest, let's say interest is 18%. So can I say this 18% that you will pay on the borrowed fund is nothing but cost of carrying debtors. ये डेटर्स को आपने उठाया, उसको 30 दिन की क्रेडिट दी, उसके वजह से हमें ये 1 लाख अरेंज करना पड़ रहा है बाहर से फ्रॉम बोरोइंग. अच्छा, बाहर से हम बोरोइंग कर रहे हैं, उसके वजह से हमें 18% इंटरेस्ट चुकाना है पर एनम. सो दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. बट सर मान लो हम तो बहुत अमीर है, हमें बोरो वोरो करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में पैसे पार्क हुए रखे हैं. सो सर इफ आई इन्वेस्ट माई ओन फंड्स, कैन आई से उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आएगा, अपॉर्चुनिटी आरओआई तो आएगा. टू इन्वेस्ट और टू अरेंज दिस 1 lakh, यू विल सेल सम, यू विल लिक्विडेट सम अदर इन्वेस्टमेंट. वहां अब अपॉर्चुनिटी, वहां अब कमाने की अपॉर्चुनिटी चली गई. सो दैट अपॉर्चुनिटी आरओआई विल बी योर cost of carrying debtors, or you can term it as opportunity cost of investment in debtors. ठीक है, वो बाहर की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों लूज कर रहे हैं? ये बिकॉज यहाँ बिजनेस में पैसा चाहिए, बिजनेस में पैसा अरेंज करने के लिए वी हैव टू लिक्विडेट some other investments, park somewhere else. Clear? So that opportunity ROI is nothing but opportunity cost of investment in debtors. Clear everyone? So this is nothing but your COCD. Understood? So this was learning objective number 1 under receivables management. I hope everything is clear till here. क्लियर मीन्स सिर्फ रिवाइज करना, आपको याद करना है, ओ सर यस इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें वैसा था, फलाना ढिमकाना. मूविंग टू नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग. फैक्टरिंग को एकदम जनरल लैंग्वेज में, लेमन टर्म्स में समझना है तो इट इज अ सिंपल आउटसोर्सिंग ऑफ योर कलेक्शन सर्विस टू अ प्रोफेशनल कॉल्ड फैक्टर. ठीक है, factoring is nothing but outsourcing of your collection process to a professional called factor. ठीक है, एंड फैक्टर इंडिया में कौन कौन बन सकता है फैक्टर? तो इंडिया में फैक्टर आर जनरली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, जो फाइनेंस फील्ड में है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे जनरली प्रोवाइड दिस आउटसोर्सिंग सर्विस. क्लियर एवरीवन? ओके सर, सर व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डू फैक्टर प्रोवाइड? सो 2 type of service factor provides. Some factor just provide, there are some factor who just provide collection service to you. Means collection service means they will take the list of debtors from you,
they will collect on your behalf. Are you understanding? In providing this service, they will ask something in return, some consideration in return, and that consideration in return is called as factoring commission या factoring fees. ठीक है? So इसके बदले में what will they charge? They will charge factoring commission या factoring fees बोलो. It is one and the same. And this fees is charged on sales का amount. It is a percentage on sales. Some percentage decided on sales. Clear? So there are some factors who just provide collection service. But there are some factors apart from just providing collection service. They also grant advance to you. Hey, can I say collection of debtors? Debtors means there is some amount blocked in your business in the form of debtors. So, ideally, you cannot afford even a single rupee to get blocked. तो फैक्टर क्या बोल रहे हैं, हम आपके बिहाफ पे कलेक्शन तो कर ही रहे हैं, वो सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट आपका जो अमाउंट ब्लॉक्ड हो रहा है मे बी फॉर 30 days 60 days, वो पैसा हमसे ही ले लो ना. वी ऑल्सो ग्रांट एडवांस, वी ऑल्सो प्रोवाइड दिस सर्विस टू यू. हमारे दुकान में सब मिलेगा. क्लियर? सो सम फैक्टर्स प्रोवाइड एडवांस एज वेल, दे ग्रांट एडवांस एज वेल. ठीक है? सो कलेक्शन सर्विस if they provide, then they charge factoring fees in return. And if they grant advance as well, so can I say they will charge interest on advance. Clear everyone? So under factoring kind of problem, हम क्या करते थे, हम इवेल्युएट ही करते थे. क्या इवेल्युएट करते थे कि क्या हमें इन हाउस कलेक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें कंपनी का ज्यादा फायदा है, या कंपनी को फैक्टरिंग सर्विस अवेल करनी चाहिए, उसमें कंपनी का फायदा ज्यादा है. सो वी यूज्ड टू इवैल्यूएट इन हाउस कलेक्शन नेट बेनिफिट, वी यूज्ड टू इवैल्यूएट और इफ फैक्टरिंग सर्विस इज अवेल नेट बेनिफिट, दिस नेट बेनिफिट ज्यादा, वी यूज्ड टू सिलेक्ट दैट. ठीक है everyone? Factoring service will not increase your sale. Factors are not your salesperson, they are your collection agent. Are you following? Sales का काम आपका है. So factoring service, factor के पास जाने से आपकी कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ेगा. Everyone understanding? Collection जो लेट होता था वो टाइम पे होगा या कुछ जल्दी हो जाएगा. Everyone understanding? So sales, so in short, operating profit will not change. There would be some savings in cost, definitely. Okay? So that is evaluation of in-house collection and availing factoring service. Okay? So format was same. Operating profit तक सब same था. Because in-house collection हो या फैक्टरिंग सर्विस हम अवेल करें, देयर इज नो इंक्रीज इन प्रॉफिट. दे आर जस्ट योर कलेक्शन एजेंट, दे आर नॉट योर सेल्स और मार्केटिंग एजेंट जो आपका सेल बढ़ाएगा और इंटर्न प्रॉफिट बढ़ा के देगा. क्लियर? दे आर योर कलेक्शन एजेंट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन आइदर केसेस वाज सेम. यहाँ पे हम ABCD माइनस करते हैं. ठीक है? सो इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विस, अब तो पूरा कलेक्शन का टास्क किसका है? फैक्टरिंग का. तो एडमिन कॉस्ट की सारी जवाबदारी विल बी ऑन दी हेड ऑफ फैक्टर. ठीक है? वो हमें पे नहीं करना है, वो हमारी जवाबदारी नहीं है. अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली से इसकी भाई भले आपने फैक्टरिंग सर्विस अवेल करी बट सम एडमिन एक्सपेंस यू हैव टू स्टिल इनकर, तो उतना पोर्शन विल बी एडेड. बट आइडियली सारी जवाबदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी of collection of receivable is taken by factor if we avail the factoring service. Clear? इन हाउस कलेक्शन करेंगे तो वो सारा एडमिन कॉस्ट का बर्डन हमें ही बेयर करना है. लाइकवाइज बैड डेट्स इफ वी डू इन हाउस कलेक्शन हमें ही बेयर करना है. बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, if students, if you remember, there are
two types of factoring, two kinds of factoring. One is recourse, one is non-recourse. Are you following? Recourse factoring agreement means the bad debts loss, if any, will be borne by whom? Will be borne by company. ठीक है, मतलब मान लो एज अ कंपनी आपने डेटर्स की कलेक्शन की लिस्ट फैक्टर को दी, फैक्टर ने लिस्ट चेक करी, ही इज कॉलिंग एवरी पर्सन, बट some 20% of the customers are not paying the amount and they will never pay the amount, means bad debts हो गया. तो ये bad debts का loss who will bear? Company will bear. Are you following? If the type of factoring agreement is recourse basis. Are you following? But if factoring agreement is on non-recourse basis, it means by factor bad debts की जवाबदारी, उसका burden, उसका loss भी तेरा, कंपनी का कोई loss नहीं. If you are not able to collect from some of the customers, वो तेरा headache है, तेरा burden है, वो कंपनी का loss नहीं है. Clear everyone? So if it is non-recourse means the burden of bad debts loss, the burden of default is on factor. But if the factoring agreement is on recourse basis, the burden of default, the burden of bad debts is on company's head. ठीक है? Collection cost, if in-house collection तो कंपनी की टीम करेंगी, but if we avail factoring services, collection will be done by factor. So collection cost नहीं, but factoring commission आप बोल सकते हो. We have to pay factoring commission or factoring fees to them. Clear? Discounting can come again in either of the cases, but discounting expense के लिए भी practically क्या होता है? It depends on the clause written in factoring agreement. Agreement में क्या लिखा है? अगर see what is factoring? Factoring is your collecting agent. तो लेट से आपने कस्टमर की लिस्ट फैक्टर को दे दी, फैक्टर इज कॉलिंग द कस्टमर एंड कुछ कस्टमर बोल रहे हैं मैं 10 दिन पहले चुका दूंगा, विल यू गिव डिस्काउंट टू अस, कैश डिस्काउंट टू अस? ओके, सो अगर सो इफ इज पेइंग बिफोर द ड्यू डेट, कैन आई से कुछ कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा? यस और नो? तो वो डिस्काउंटिंग एक्सपेंस का बर्डन हु विल टेक इफ वी अवेल द फैक्टरिंग सर्विस? बोलो क्या लग रहा है? हु विल टेक? सो अगेन एक्चुअली डिपेंड्स, प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन अग्रीमेंट में क्या लिखा है. इज इट नॉन रिकोर्स और रिकोर्स? अगर नॉन रिकोर्स है तो डिस्काउंटिंग एक्सपेंस भी फैक्टरिंग को ही बेयर करना है, वो हमें बेयर नहीं करना है. क्लियर एवरीवन? यू हैव टू रीड द क्लॉज ऑफ फैक्टरिंग अग्रीमेंट इन प्रैक्टिकल वर्ड. अगर रिकोर्स है तो डिस्काउंटिंग एक्सपेंस कंपनी को बेयर करना है. Clear everyone? So read the question. Here the question would be your agreement. Even if question is silent, you are free to assume anything. Just write a note at the end. Clear everyone? Factoring commission. ठीक है? फिर interest on advance granted आएगा. In-house collection करते हैं तो there is no such case of इंटरेस्ट ऑन एडवांस ग्रांटेड, बिकॉज फैक्टर ने कोई पैसा ही नहीं दिया, तो व्हाई विल वी पे इंटरेस्ट इन रिटर्न? क्लियर? बट इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विसेज एंड दे आर आल्सो ग्रांटिंग एडवांस टू अस, तो इंटरेस्ट जरूर से चुकाना पड़ेगा. क्लियर? एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एडवांस ग्रांटेड? तो उसका एक फॉर्मेट था. फॉर्मेट वाज स्टेप 1, कैलकुलेट डेटर्स. Under factoring kind of questions, under factoring problem, students, if you remember, I gave you one very important note. Note was debtors has to be valued on sales for factoring problem. ठीक है? So sales debtors कैसे calculate करते हैं? It is nothing but credit sales into average collection period divided by 365, 1252. So step 1 was to calculate debtors. पहले अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स कितना है वो तो चेक करो, बिकॉज अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स इज द अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट यू नीड. अंडरस्टैंडिंग? सो लेट्स से अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स फॉर द टाइम बीइंग एनी रैंडम नंबर 20 lakh. सो दिस इज द अमाउंट दैट यू नीड फ्रॉम फैक्टरिंग एज अ एडवांस. ठीक है? सो हम फैक्टर के पास जाते थे, फैक्टर ग्रांट मी 20 lakh.
फैक्टर पहला जवाब क्या देता था? वेट। हमारे इंडस्ट्री में पहले हमें रिजर्व्स डिडक्ट करना पड़ता है, रिजर्व्स फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसी, रिजर्व फॉर सेफ्टी, हमें पहले वो डिडक्ट करना पड़ता है। हम पूरा 20 लाख आपको नहीं दे सकते। क्लियर? सो पहले फैक्टरिंग, लेट से द रिजर्व्स मेंटेन बाय फैक्टर इज 10%, तो हम पहले फैक्टरिंग रिजर्व माइनस करते थे, 2 लाख आया, तो हम क्या बोलते थे फैक्टर को? ठीक है, तेरे इंडस्ट्री में, तुम्हारे बिजनेस में इट इज अ रूल कि रिजर्व कट करने का, तो कट करो, गिव मी 18 lakhs। आर यू फॉलोइंग? फैक्टरिंग, बट नाउ फैक्टरिंग इज सेइंग ग्रांट मी एडवांस ऑफ, सॉरी, वी आर सेइंग टू फैक्टर ग्रांट मी एडवांस ऑफ 18 लाख, बट फैक्टरिंग सेइंग वेट, हमारे बिजनेस में एक और उसूल है, एक और प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? फैक्टरिंग कमीशन जो बनता है ना, वो भी हम पहले काट देते हैं। वी डिडक्ट द फैक्टरिंग कमीशन बिफोर ग्रांटिंग यू द एडवांस। आर यू फॉलोइंग? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर बिजनेस। लेट से इट इज 1%, सो कैन आई से 20 लाख का 1%, it comes to 20,000. So 0.2 lakh is first commission deducted to you, deducted, and then we grant you the advance, and then advance is granted. ठीक है? तो कितना है? 17.8 lakh. ओके, सो फैक्टर इज ग्रांटिंग अस एडवांस ऑफ 17.8 लाख। अब इस पे जो भी इंटरेस्ट बनता है, लेट से इंटरेस्ट इज 18% पर एनम, so can I say my interest on advance granted by factor? Interest on advance granted by factor would be 17.8 lakh into 18% per annum. Clear? This is how you calculate interest on advance granted. We have learned this in our regular classes. Just a quick recap. Okay. अगर इस आप वर्किंग नोट में ही ध्यान से चेक करो, यही वर्किंग नोट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस ग्रांटेड में आप चेक करो, माय रिक्वायरमेंट ऑफ फंडिंग वाज हाउ मच? 20 लाख। मुझे जरूरत थी 20 लाख की। एट द एंड सब काट कुट करके फैक्टर ने मुझे कितना दिया? 17.8 लाख। ए अमाउंट ब्लॉक फॉर मी इज 20 लाख. Factor gave me 17.8 lakh. So still there is some amount left which is blocked and जिसका फंडिंग अभी तक मुझे मिला नहीं है, 2.2 लाख। आर यू फॉलोइंग? ये जो काट कुट किया ना, उसका फंडिंग मुझे मिला नहीं है। सो कैन आई से आइडियली दिस 2.2 लाख आई विल अरेंज आइदर from borrowing from some other bank or either I will invest my own funds. ठीक है? अगर आप ये 2.2 लाख बोरो करते हो तो सीओसीडी आएगा। अगर आप ये 2.2 लाख खुद के पैसे से अरेंज कर रहे हो, खुद के सोर्सेज से, ओन फंड से अरेंज कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स आएगा। क्लियर एवरीवन? बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2.2 लाख. Understanding everyone? So even in this factoring problem, there is COCD, but छोटा अमाउंट. हाँ, इफ यू आर गोइंग थ्रू इन हाउस कलेक्शन तो फैक्टर तो 1 रुपया नहीं देने वाला है, तो पूरा 20 लाख आपको बाहर से या खुद से ही अरेंज करना है. ठीक है? सो दिस इज फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट. So the learning objective, quick revision of receivables management is done. Now let's move to chapter 3, cash and treasury management. Cash and treasury management. What were the learning objective under this chapter? तो इसमें भी दो ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे. फर्स्ट, लर्न हाउ टू प्रिपेयर कैश बजट. So students, if you recollect, cash budget is nothing but your simple receipts and payment account. Receipts and payment account ही बनाना है, but for future होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए.
आपने 11th क्लास 12th क्लास में भी ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट पूरा चैप्टर, पूरा अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखा है, बट उसमें द ओनली डिफरेंस वाज यू वर प्रिपेयरिंग द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट वर ऑलरेडी इनकर्ड, जो घटना घट चुकी थी, वो घटनाओं का आप रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते थे, कैश बैंक अकाउंट बनाते थे। यहाँ पे हम कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, बट फ्यूचर में लाइकली ट्रांजेक्शन्स के, ठीक है। सो कैन आई से द कैश, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बजटिंग। बजट मीन्स एस्टिमेशन, नॉट द accurate amount, estimation. Understood? So the learning objective number 1 of cash and treasury management was to prepare simple receipts and payment account for the budgeted period. Clear? कैश बजट क्यों बनाते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसका इंपॉर्टेंस वाज टू नो, लेट्स से आई वांट टू नो कि मेरा नवंबर एंड में कैश बैंक बैलेंस कितना होगा। बट सर ऐसी पंचायत क्यों करनी है, क्यों जानना है नवंबर एंड का बैलेंस, इतनी क्यों पंचायत है आपको? ए द रीजन इज मुझे दिसंबर में मेजर एक्सपांशन प्रोजेक्ट करना है, देयर आर मल्टीपल ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, तो वो प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा तो लगेगा। सो डू आई हैव इनफ फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग इन दोस प्रोजेक्ट्स? अच्छा, इनफ फंड्स नहीं है तो आई नीड टू अरेंज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ना, सो आई नीड टू प्लान ऑल दिस स्टफ्स। अंडरस्टैंडिंग? तो उसके लिए कैश बजट रिक्वायर्ड है। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस, द इंपॉर्टेंस, इसलिए ये सब पंचायत कर रहा हूं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 अंडर कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट वाज टू प्रिपेयर simple cash budget, that is nothing but a simple receipts and payment account for your future transactions. So let's say मुझे आने वाले 3 महीने यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर का कैश बजट बनाना है, तो व्हाट वाज द फॉर्मेट? ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करेंगे। 1 अगस्त की ओपनिंग बैलेंस से वी विल स्टार्ट आर कैश का गल्ला, दुकान का गल्ला है ये, वैसा समझो। दुकान के गल्ले में कोई भी सोर्सेस से, बीट फ्रॉम लोन, बीट फ्रॉम इनकम, कोई भी सोर्सेस से पैसा आ रहा है तो इनफ्लो रिसिप्ट, कोई भी सोर्सेस से पैसा जा रहा है गल्ले में से तो इट इज एन आउटफ्लो पेमेंट। अंडरस्टैंडिंग? बीट एनी सोर्सेस, लोन चुका दिया या खर्चे का पेमेंट किया, गल्ले में से पैसे कम हुए तो पेमेंट। अंडरस्टूड? सो यर सेल्स कब हो रहा है, खर्चा कब हो रहा है, परचेज कब हो रहा है, इट इज नॉट रेलिवेंट, but the receipt of sales is relevant. When the sales amount is getting received, that is relevant in this chapter. When are we making the payment for purchases or expenses, that is relevant in the chapter, in this chapter. Clear everyone? So opening balance से start करेंगे, फिर we will add some receipts. Receipts में the general line items, this is just an illustrative list of receipts. कौन सी हो सकती है? तो कैश सेल से पैसे मिल सकते हैं, गल्ला बढ़ेगा। क्रेडिट सेल से पैसा नहीं मिलेगा, क्रेडिट सेल से, हाँ, फ्यूचर में जब पैसा मिले, दैट टाइमिंग इज रेलिवेंट, टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट इज रेलिवेंट, नॉट द सेल्स डेट इज रेलिवेंट, ठीक है। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सो मान लो फेब्रुवरी सेल्स का पैसा अगर आपको अगस्त में मिल रहा है तो इट विल कम अंडर द रिसीप्ट साइड ऑफ अगस्त, ठीक है, भले ही वो फेब में सेल हुआ था। अब मान लो अगस्त में सेल हुआ, उसका पैसा दिसंबर में मिलने वाला है, तो इट विल नॉट कम एनीवेयर। अंडरस्टैंडिंग? वी आर नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट, वी आर प्रिपेयरिंग कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट। ए कैश इंक्लूड्स बैंक, बाय कैश आई मीन कैश बैंक, सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं। थर्ड, लेट से इफ आई इशू न्यू कैपिटल, इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, तो पैसा मिलेगा। लेट से आई बोरो फंड्स फ्रॉम बैंक, फ्रॉम डिबेंचर्स, तो वो भी पैसा मिला, मींस रिसिप्ट साइड। आई सोल्ड सम फिक्स्ड असेट, तो अगेन सेल से पैसा मिलेगा। क्लियर एवरीवन?
I sell some investment. पैसा मिलेगा under receipt side. So these are some general line items that you will generally see on the receipt side. But again, this is just an illustrative list ना. इतने ही line items है वैसा मत समझना. इसमें से we will deduct payments. So general illustrative list of payment would be अगर कोई कैश परचेस किया है पैसा जाएगा गल्ले में से पेमेंट टू क्रेडिटर्स नॉट द डेट ऑफ परचेजेस ठीक है क्रेडिटर को अगर आपने पेमेंट किया है इन योर बजटेड पीरियड देन पैसा जाएगा सो यू हैव टू रिपोर्ट इट अंडर कैश बजट क्लियर लेट से लोन चुका दी पैसा गया इट विल कम अंडर पेमेंट साइड पेमेंट ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किए अगेन इट इज अ पेमेंट सो रिकॉर्डेड अंडर पेमेंट साइड ए बायबैक ऑफ शेयर्स किया जो नए शेयर्स इशू करे थे थोड़े साल बाद कुछ साल बाद उसका बायबैक कर दिया तो कहना से बायबैक ऑफ शेयर्स अगेन यू हैव टू पे समथिंग टू द शेयर होल्डर्स सो दैट इज ऑन द रिसिप्ट सॉरी पेमेंट साइड क्लियर इफ यू बाय न्यू फिक्स्ड असेट परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ करते हो अगेन ऑन द पेमेंट साइड पैसा गया सो दिस आर सम जनरल लाइन आइटम्स दैट यू विल सी ऑन द पेमेंट साइड ऑफ योर बिजनेस क्लोजिंग बैलेंस सो क्लोजिंग बैलेंस इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस रिसीप्ट लेस पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑगस्ट कह रहा है से इट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ सितंबर सितंबर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा yes or no so it will become opening balance of September likewise opening balance of September plus receipt less payment closing balance of September closing of September will be taken above as opening for October add receipt less payment get closing of October ठीक है एंड अक्टूबर में क्लोजिंग अमाउंट जो भी मिलता है उससे सीएफओ और फाइनेंशियल मैनेजर कैन प्लान फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस कैन प्लान इवन फॉर डिविडेंड पेमेंट कि भाई पैसा अच्छा आने वाला है मींस वी आर हैविंग सफिशिएंट कैश बैंक बैलेंस लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इंटरिम डिविडेंड or there is some lucrative investment project that could be taken in November तो भाई पैसा है इन्वेस्ट करो clear so this is the purpose to prepare cash budget learning objective number 2 was about understanding some cash management models cash management models का पर्पस क्या था द पर्पस वॉज टू एक्सप्लेन यू कि भाई बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा रखना हाई कैश बैंक बैलेंस रखना वेरी हाई कैश बैंक बैलेंस इज इंजूरियस टू कंपनीज फाइनेंस हेल्थ आर यू फॉलोइंग इट इज इंजूरियस टू कंपनीज फाइनेंस हेल्थ अच्छा बहुत कम कैश बैंक बैलेंस रखना भी इंजूरियस टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी देयर हैज टू बी अ some optimum amount of cash that company should keep with itself which is good which is not injurious but advantageous for financial health of the company are you following so cash management models का ऑब्जेक्टिव क्या था आपको ये समझाना था कि भाई कंपनी में एक्सेस कैश बैंक बैलेंस ड्रॉअर में रखना बैंक में आइडल रखना इज इंजूरियस टू फाइनेंशियल हेल्थ यू आर लूजिंग some opportunities to earn यही कैश एंड बैंक बैलेंस आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो कोई अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो वहां से आप कमा सकते हो ठीक है बट यू आर लूजिंग दैट बिकॉज यू आर कीपिंग वेरी हाई कैश बैंक बैलेंस लाइकवाइज कीपिंग वेरी लो कैश बैंक बैलेंस ये पैसा ही नहीं है तो आप अपने रूटीन एक्सपेंस कैसे इनकर कर पाओगे अगेन इंजूरियस टू फाइनेंशियल हेल्थ यू आर नॉट एबल टू पे for your day-to-day business expenses.
So there has to be some optimum cash balance that company should keep with itself so that business opportunity भी lose ना हो and routine के खर्चे भी smoothly चले. Are you following? So how to calculate, how to derive the optimum cash balance for the company? तो उसके लिए हमने दो finance scholar came into picture. One was William Baumol model of optimum cash balance. And students, you know that William Baumol model is just the replica of EOQ model. EOQ was the best economic order quantity, the best ordering quantity, जहां पे आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड जहां पे आपका स्टोरेज कॉस्ट सबसे लोएस्ट होता था, इकोनॉमिकल होता था. क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे भी William Baumol gave cash balance, optimum cash balance model. Not cash balance model, but the optimum cash balance model. Means कंपनी को ऑप्टिमम या कैश बैलेंस कितना रखना चाहिए, which is best, which is economical from company's financial health perspective. ठीक है? So the formula given by William J. Baumol to calculate optimum cash balance is nothing but 2AT upon I, the whole under the root, square root. ठीक है? A was the annual cash requirement. Like in EOQ, A was annual inventory required. T is the transaction cost per transfer. T was the transaction cost per transfer. ठीक है? What was transaction cost? See, if your company had generated high cash balance, तो विलियम जे बॉमल क्या बोलता है? यू हैव टू कीप द ऑप्टिमम बैलेंस ओनली. मीन्स मेरी फॉर्मूला से जो बैलेंस आ रहा है ना उतना रखना है. तो द क्वेश्चन अराइजेस, फिर हम ये सरप्लस का क्या करें जो ज्यादा कमा लिया उसका? सो विलियम बॉमल से ट्रांसफर इट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्ट समवेयर एल्स. तो कहना है अगर हम इन्वेस्ट कहीं और करते तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेंगे. यस और नो? घर लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो ब्रोकरेज लगेगा. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो यू विल हैव टू पे अगेन ब्रोकरेज, कमीशन, एसटीटी, टर्नओवर टैक्स, जीएसटी वगैरह वगैरह. सो कैन आई से टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम कंपनीज बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बीच में कौन आएगा? ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएंगे. अच्छा, मान लो यू डोंट हैव इनफ फंड्स इन योर गल्ला, but William Baumol is saying no, you have to maintain this optimum cash balance with your company. You have to arrange now somewhere from somewhere. So can I say we will liquidate the investment? Means investment account को break करेंगे और company account में लाएंगे. तो again if you sell your real estate, brokerage लगेगा. Sell your stock, brokerage, STT, turnover tax सब लगेगा. So can I say again transaction cost? So transaction cost is nothing but the cost incurred to transfer from company's bank account to investment account to and fro. Clear? And I is nothing but your rate of interest. ROI, return on investment, rate of interest, opportunity cost of investment. कुछ भी बोलो, it means same. ठीक है? ए सोचो सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों आएगा इसमें? ये सोचो, कंपनी में 50,000 बैलेंस रखना है. लेट्स से एज पर विलियम जे बॉमल मॉडल 50,000 इज द ऑप्टिमम कैश बैलेंस दैट कंपनी शुड कीप विद इटसेल्फ एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम. अब आपके पास गल्ले में सिर्फ 10,000 पड़े, तो 40,000 आपको अरेंज करने पड़ेंगे. 40,000 अरेंज करने के लिए यू विल लिक्विडेट सम इन्वेस्टमेंट, you will break some FDs, you will sell some stock, you will sell some real estate property, correct? So if you liquidate the investment, can I say now you would lose the opportunity to earn some return from that investment? Yes or no? So that is I over here. Why? Because ये पैसा इन्वेस्टमेंट को तोड़ के आप कंपनी में लाए,
तो अब वो जो पैसों से आप जो रिटर्न कमा सकते थे from share market, from real estate, from gold, anywhere. That opportunity is lost. So that is I over here. Understood? ROI, rate, opportunity, ROI. Clear everyone? So this was William Baumol model. Acha, as per William Baumol model, by applying the formula, एक अमाउंट आता था. लेट्स से दैट अमाउंट कम्स टू 50,000. सो एज पर विलियम बॉमल, उसका इंटरप्रिटेशन इज वेरी सिंपल. कंपनी को अपना कैश बैंक बैलेंस 50,000 रखना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम. अगर 50,000 से गल्ले में ज्यादा अमाउंट है तो एक्सेस को आप इन्वेस्ट कर दो, बट इन्वेस्ट करोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. ठीक है. अगर 50,000 से गल्ले में बैलेंस कम है तो अरेंज द शॉर्टफॉल बाय ब्रेकिंग द इन्वेस्टमेंट. अगेन ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगा. बट दिस 50,000 इज दैट कैश बैलेंस वेर योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट and your opportunity ROI is same. And in fact, this is the lowest of amongst all the permutation combination. जैसे EOQ में था ना, EOQ was that ordering quantity where your ordering cost and storage cost was same and lowest. Are you following? So इसमें भी वैसा है. This is optimum cash balance is that cash balance where transaction cost भी सबसे minimum लगेगा, ROI भी सबसे कम होगा, opportunity ROI भी सबसे कम होगा. Clear means losing an opportunity would be lowest. Understanding? So this was William J. Baumol of optimum cash balance. अब विलियम जे बॉमल मॉडल के आर्ग्यूमेंट में कौन से फाइनेंस स्कॉलर आए? तो मिलर एंड और मॉडल आर आर्ग्यूइंग विलियम बॉमल. व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग? दे आर आर्ग्यूइंग टू विलियम बॉमल की हे विलियम बॉमल, यू आर सेइंग कि कंपनी को एट एनी टाइम 50,000 चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. कंपनी का बिजनेस सेल्स साइकिल चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली. मतलब बिजनेस में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां ज्यादा फंड की रिक्वायर होती है, जहां ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है. ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग द ऑन सीजन, ड्यूरिंग सीजन टाइम, you need more funds. Are you following? You need more cash and bank balance. So you cannot say कि तब भी you cannot say कि नहीं भाई फिक्स 50,000 ही रखने का. No, you are wrong in that case. And there is some off season period जहां पैसों की कम रिक्वायरमेंट है, तो you cannot again say कि नहीं भाई 50,000 ही रखना है. You are stochastic. The requirement of cash is not standard. It is not fixed. It varies according to business sales cycle, according to different seasons. Are you following? So you are saying at any given point in time, be it season, be it off season, 50,000 रखना है. This is not logical. Clear? So this is the argument of Miller and Orr. तो विलियम बॉमल इज सेइंग, तो फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सो मिलर और आर रिप्लाइंग कि भाई हमारे हिसाब से देयर हैज टू बी सम रेंज ऑफ कैश बैलेंस, not a standard cash balance that company needs to maintain. ठीक है. There has to be a range of cash balance, higher range, lower range, based on company's past experiences, based on company's future planning or future requirement, based on company's seasons of sales. Cash balance will be fluctuating. Off season है तो कैश बैलेंस रिक्वायर्ड वुड बी लो. सीजन टाइम है, कैश बैलेंस रिक्वायर्ड वुड बी हाई. नॉर्मल सीजन है, कैश बैलेंस रिक्वायर्ड वुड बी मीडियम रेंज. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? मिलर विलियम बॉमल वाज सेइंग बाय 50,000 तो 50,000 थ्रू आउट द ईयर. उसकी लाइन ऐसे थी, स्ट्रेट लाइन. बट मिलर एंड ऑल आर आर्ग्यूइंग कैश रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. चेक योर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि कौन से टाइम पे आपको ज्यादा पैसे की जरूरत थी. डिसाइड द हायर रेंज, लोअर रेंज, एंड योर कैश बैलेंस शुड always fall, always lie. The heartbeat of cash should always lie between this range. हाँ, हायर रेंज से ऊपर जा रहा है तो एक्सेस जो जा रहा है यू कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स.
your optimum or your cash balance required falls below the lower range, so you liquidate the investment and bring the and rise the amount of cash surplus. ठीक है, एंड अपना कैश बैलेंस बढ़ा दो, रेज द पूल ऑफ कैश. हायर रेंज के ऊपर जा रहा है, इन्वेस्ट कर दो. लोअर रेंज से नीचे जा रहा है, liquidate your investment and raise the pool of cash. Clear? This is what Miller and Orr model of cash management is all about. I hope everyone are able to recollect all the concepts. So this was objective number 2 of cash and treasury management. That is learning cash management model. William Baumol and Miller Orr model. Clear? So हमारा कैश कंपोनेंट, कैश मैनेजमेंट चैप्टर इज ऑल्सो डन. इन्वेंट्री मैनेजमेंट आई टोल्ड यू, वो आपको कॉस्टिंग पेपर में सीखना है अंडर द चैप्टर हेड मटेरियल कॉस्टिंग. ठीक है, दैट सेम कॉन्सेप्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. सो नॉट टू रिपीट अंडर बोथ द पेपर्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेबल्स मैनेजमेंट. ठीक है, पेबल्स मैनेजमेंट जैसे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट था, मींस यू आर मैनेजिंग योर कस्टमर्स, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने बिजनेस का. वैसे ही टू मैनेज योर पेबल्स, टू मैनेज क्रेडिटर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो पेबल्स में आइडियली क्या होगा, आइडियली वी हैव टू इवेल्युएट कि क्या हम क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट कर दें, वो कंपनी के लिए फायदेमंद है. कंपनी को ड्यू डेट पे पेमेंट करे, उसमें फायदा है कंपनी का, या लेट करे, ड्यू डेट से भी लेट करे, उसमें कंपनी का फायदा है. तो आइडियली तो ड्यू डेट से भी लेट करने में ज्यादा फायदा है आइडियली. बट इफ यू डू नॉट पे ऑन ड्यू डेट and if you keep on delaying beyond due date, can I say it will hamper your credit image? No one will love to do business with you. अच्छा, एक क्रेडिटर को पता चल गया कि भाई मैंने इसको 60 डेज की क्रेडिट दी थी, 120 दिन हो गए फिर भी ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं. ही विल स्प्रेड दिस वर्ड इन द एंटायर मार्केट. तो पूरे मार्केट में फैल जाएगी ये बातें कि भाई डोंट डू बिजनेस विद द्वीप. 60 दिन का 120 दिन हो गया, ही इज नॉट पेइंग मी द अमाउंट. तो क्रेडिट इमेज हैम्पर्स, people will stop doing business with you and ultimately your business will hamper, your business operations will hamper. ठीक है, so due date के बाद तो ideally you should not make the payment. If there are some genuine reasons, there are some constraints of funds genuinely, so you can request the creditors and delay beyond the due date as well. But again it is very specific. आप ऐसा regular नहीं कर सकते. It is one off situation under some exceptions. Clear? So here in this chapter we have to evaluate कि क्या हमें क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट कर देना चाहिए. जल्दी पेमेंट कर देना चाहिए means let's say the credit generally allowed by creditor is 40 days, but he has given one option कि if you pay within 15 days I will give 3% डिस्काउंट टू यू. तो क्या हमें वो डिस्काउंट अवेल करके जल्दी पेमेंट करना चाहिए, या पे ऑन द लास्ट डे, दैट इज पे ऑन ड्यू डेट, एंड डिस्काउंट को लात मार देनी चाहिए, रिफ्यूज कर देना चाहिए. दिस इज व्हाट वी हैव टू इवेल्युएट अंडर पेबल्स मैनेजमेंट. ठीक है, क्या इज इट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू पे अर्ली एंड गेट द कैश डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर, और डिस्काउंट को लात मार दो एंड पे ऑन द लास्ट डे, दैट इज 40th डे. तो उसके लिए इट डिपेंड्स. सी डिस्काउंट टर्म डिस्काउंट इज यूज्ड फॉर लेमैन अंडरस्टैंडिंग. बट स्टूडेंट्स, हमने सीखा था कि ये जो डिस्काउंट है ना, वो एक्चुअली डिस्काउंट नहीं है. इट इज इम्प्लाइड इंटरेस्ट, द हिडन इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिटर्स फ्रॉम अस. हमें क्या लगता है कि ट्रेड क्रेडिट मींस क्रेडिटर से हमें फ्री में क्रेडिट मिल रही है,
फ्री में पैसा यूज करने मिल रहा है. नो, ही इज चार्जिंग सम इम्प्लाइड इंटरेस्ट, हिडन इंटरेस्ट फ्रॉम इट. Are you following everyone? So this hidden interest is first calculated. Implied interest is first calculated. Then it is this implied interest is compared with actual ROI. Are you following everyone? So इसमें evaluation करने के कुछ steps थे. Step number 1 क्या था? Step 1, you calculate implied rate of interest charged by creditor. And layman terms में, see, layman does not understand such complications, such complex understandings. ठीक है? Layman को इतना complex calculations, concepts नहीं समझता है. वो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा है, इसलिए वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड इंटरेस्ट, बट फॉर देम व्हाट इज इम्प्लाइड इंटरेस्ट दे डोंट नो. सो उनको समझने के लिए भी टर्म टेस्ट की क्रेडिटर से कैश डिस्काउंट मिल रहा है, बट आइडियली it is not cash discount, it is the hidden interest, implied interest that creditor is charging from us. Clear? So you calculate implied interest, that is step number 1. Step number 2, you compare implied interest, you compare implied rate of interest with actual ROI, with actual rate of investment. ठीक है? And then decide कि whether company should avail the discount or refuse the discount. ठीक है? Students, if you recollect, implied rate of interest calculate करने के लिए there were 2 methods. One was approximation method, interpolation method, जिसको हम अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते थे. एंड वन वाज कंपाउंडिंग मेथड, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. ठीक है? जस्ट टू गिव अ क्विक इंसाइट्स हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट using approximation method and how to calculate rate of implied interest using compounding method, let me just give you an example so that आपको फटाक से वो कैच हो जाए, रिकलेक्ट हो जाए. Let's say purchase value is ₹1000. ठीक है? सो मैंने सप्लायर से 1000 रुपीज का गुड्स खरीदा. The credit terms given by supplier is 3/15 net 40. It means normal, the general credit terms are 40 days. But if you make payment on or before 15 days, then I will give discount of 3%. ठीक है? मीन्स आपको 1000 नहीं भरना है, आपको कितना भरना है? 1000 में 3% डिस्काउंट, यानी कि कितना होगा? 970 होगा. ये सर नो, 1000 का 3%, यस, 970 रुपीज. क्लियर? टाइमलाइन बना रहा हूं ना. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर सीइंग दिस टाइमलाइन दे विल रिकलेक्ट एवरीथिंग. दिस इज डे 0, दिस इज डे 40, दिस इज डे 50. ठीक है? अगर 40th डे पे चुकाएंगे तो पूरा 1000 चुकाना पड़ेगा. अगर 15th डे पे जाके पेमेंट करते हैं तो इज सेइंग पे मी जस्ट 970. ठीक है? सो आई एम आर्ग्यूइंग विद हिम, व्हाई आर यू चार्जिंग ₹30 मोर if I delay the payment by 25 days? Are you understanding? Why are you charging 30 more if I delay this 970 rupees of payment by 25 days? अगर यही 970 रुपीज में 25 दिन बाद भरता हूं तो उसका तो 30 रुपया एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है? सो इज सेइंग भाई ये 30 रुपया तुझे लग रहा है डिस्काउंट है, बट आई एम चार्जिंग एज एन इंटरेस्ट ऑन दिस 970 रुपीज फॉर 25 days. Are you following? This is implied interest that I am charging from you. Are you following? So can I say implied interest is 30 rupees on 970 for
25 सॉरी परसेंट में कितना हुआ ये? सो दिस कम्स टू 30 rupees is the interest that is charged on 970 rupees. So in percentage, it comes to 3.0927. So, socho students, supplier is charging rupees 30 extra on 970 just for 25 days. Are you following? So this 3.0927% जो आया वो 25 दिन का ब्याज है. ब्याज इन परसेंटेज 365 days का कितना होगा? If I want to calculate the implied interest rate on annual basis, so can I say supplier is charging 3.0927 to 365 divided by 25, 45.15%. Are you understanding? This is the rate of interest that creditor is charging from us annually. Understanding everyone? This is how you calculate implied rate of interest using approximation method. हमने अभी जो ये इंटरपोलेशन किया ना, दैट इज अप्रोक्सीमेशन मेथड. अब यही मेथड को कंपाउंडिंग मेथड से करना हो, यही कैलकुलेशन को कंपाउंडिंग मेथड से करना हो, तो कैन आई से कंपाउंडिंग मेथड इज नथिंग बट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट. प्रेजेंट वैल्यू 1 plus r raised to n will give you future value. Present value on 15th day, the amount is 970. Future value, this 970 after 25 days, that is on day 40, will become 1000 rupees. At what rate of interest? This is finding R, implied rate of interest, using compounding method. And can I say interest is for 25 days? N is 25 divided by 365. Clear everyone? Understood? So this is calculation using compounding rate. You can solve this by log table, but log table बहुत complicated way of solving है. So I have explained you how to solve this on Calci as well. Okay? So you can check the recording of my regular classes and see the steps how to calculate this on calculator directly. ठीक है? So उसमें से let's say कुछ R मिलेगा. Let's say R comes to 3.19%. ठीक है? So this 3.19%, अगर R 3.19% आया, so that would be for 25 days. वैसे 365 days के लिए कितना you will do the interpolation. ठीक है? उससे कुछ R मिलेगा आपको. So this is using compounding rate of interest. So let's say in our present example, my R using approximation comes to 45.15%. It means the interest that supplier is charging from me annually is 45.15%. मतलब मैं उससे गुड्स उधारी पे खरीद रहा हूं ना, वो उधारी मुझे कितने में पड़ रही है? 45.15% में. ठीक है? अब मान लो माय एक्चुअल ROI is just 25%. My actual ROI is just 25%. Can I say नुकसानी का धंधा है? If I take the credit, if I avail the credit of 45.15% and my actual कमाई is 25% only, means आप कमा रहे हो 25%, आप चुका रहे हो 45.15% if you avail the credit from supplier. तो कहना है नुकसानी का धंधा है. So it is better you pay early and accept the discount, because if you do not pay early, if you refuse the discount,
means he is charging implied interest of 45.15% from you. क्लियर? एंड आप तो एक्चुअल कमा रहे हो 25%, नुकसानी का धंधा। क्लियर? आपने होम लोन ली है जिसका इंटरेस्ट रेट है 10%, बट आपकी कमाई, आप जो बिजनेस से कमा रहे हो वो 2% ही कमा रहे हो। तो विल यू बी एबल टू सर्वाइव, विल यू बी एबल टू पे योर होम लोन इंटरेस्ट? ये वैसी सिचुएशन हो गई। क्लियर? सिर्फ implied interest rate is greater than actual ROI, you accept the discount and pay early. Don't enjoy full credit from supplier. Understanding everyone? Clear? On the other hand, if implied rate of interest, let's say it comes to 12% only, and your actual ROI is 25%, मीन्स आप जो पैसे उधारी पे ले रहे हो, उधारी मीन्स ट्रेड क्रेडिट ओवर ईयर। ठीक है? आइडियली हमें क्या लगता है, क्रेडिटर से कोई इंटरेस्ट नहीं हमें चुकाना है, बट आई टोल्ड यू ना, देयर इज इम्प्लाइड इंटरेस्ट, हिडन इंटरेस्ट। सो क्रेडिटर की उधारी हमें 12% पे पड़ रही है, वी आर अर्निंग 25%। भाई उधारी लो, पूरा एंजॉय करो, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू एंजॉय फुल क्रेडिट, you are able to survive. So refuse the discount, pay on the due date, enjoy full udhari, full credit. Clear everyone? Understanding? Okay. अगर आप घर, यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस, ठीक है, यू आर प्लानिंग कि भाई 2 करोड़ का घर है, मैं पूरा खुद का पैसे लगा देता हूं 2 करोड़। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, ये 2 करोड़ अगर मैं लोन से लेता हूं तो 9% इंटरेस्ट भरना है। ठीक है? मीन्स इफ आई टेक द लोन, आई हैव टू जस्ट पे 9%। तो मेरा 2 करोड़ तो बच गया। सो आई विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आई विल गेट 15%। सो इट इज बेटर ना कि भाई आई डोंट बाय द हाउस फ्रॉम माई ओन फंड, लेट मी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, वहां से 15% कमाने दो और 9% मैं इंटरेस्ट चुका दूंगा फॉर द लोन। सो ये वैसी सिचुएशन हुई, यू आर अर्निंग 25%, तो भाई उधारी लो, पे ऑन लास्ट डे, रिफ्यूज द डिस्काउंट। क्लियर एवरीवन? This is that case. So this is how you analyze, how you decide whether to avail the discount or refuse the discount. Clear everyone? So this was all about payables management. So in short, it is almost 1 hour and 50 minutes. We covered all the learning objectives of the whole group, of the whole umbrella of management of working capital. ये पूरी बड़ी एक अम्ब्रेला है, बड़ा एक ग्रुप है, उसमें फिर छोटे 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 अलग अलग सब कॉन्सेप्ट्स है. So we quickly revised and I hope this session has been useful to all the students. आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्विकली याद आ गए. हमने क्या पढ़ा था लाइव वर्चुअल क्लासेस में, कौन सी फॉर्मूलाज देखी थी. हाँ, द लॉजिक आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज we have just 2.5 hours का सेशन and we have to revise everything. Clear? So लॉजिक का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखना हो, you can see the recording of live virtual classes. Understood? So this was payables management. Now still we have some time, so we can solve some questions from RTP, so that if we take numbers, better clarity milti hai on the concepts. So let's take some numbers. So all the students, please open September, आपकी attempt की RTP September 2026, and let's see if there is any question on management of working capital chapter. सारे स्टूडेंट्स प्लीज ओपन RTP September 2026. Dividend decision, capital budgeting decision, management of working capital. Yes, question 8 is on management of working capital. A firm, question 8. So RTP September attempt 2026, question number 8. ठीक है?
A firm has total annual sales of 200 lakhs, of which 80% are made on credit. ठीक है, so 200 का 80% means 160 lakh are credit sales, 40 lakh are cash sales. The company offers a credit term of 2 by 14 at 120. It means our general credit period is 120 days. ठीक है, 4 महीने की क्रेडिट है. But if you make payment on or before 40 days, so you will get 2% discount. आउट ऑफ द टोटल क्रेडिट कस्टमर्स, ये मतलब जो हमारा टोटल क्रेडिट सेल्स है ना 160 लाख में से, उसमें से 50% अवेल देमसेल्व्स ऑफ द कैश डिस्काउंट. ये मींस 80 लाख सेल्स वाले कस्टमर ऐसे हैं जो कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं. मींस टेक्निकली कहने से उनका पेमेंट 40 डेज में हो जाता होगा. यस और नो? सो एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर 80 lakhs वर्थ कस्टमर would be 40 days, and बाकी का remaining customer settle their account after 120 days. So 80 lakh वाले worth customers are saying no, we will pay on the last day. So उनका collection period would be 120 days. Understood till here? First para. Based on past experiences, bad debts losses amount to 1% approximately of credit sales. So bad debts losses is 1% of 160 lakhs. In addition, the firm incurs 2,40,000 per annum in administering its credit sales. ये मतलब 2,40,000 is your administration cost of receivable. This cost can be avoided because a factor is willing to purchase firm receivable. अब यहाँ पे आपको हिंट मिल गई कि सर ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में से तो है, बट उसमें भी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, उसमें भी फैक्टरिंग वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. Clear? The factor will charge 2% commission and provide advance against receivables at interest of 18% while retaining 10% as reserve. It means यहाँ पे type of factoring service is collection service plus granting of advance. दोनों चीजें फैक्टर से ही मिल रही है. So can I say factoring commission आएगा और साथ में interest on advance grant भी आएगा. Determine the effective cost of factoring assuming 360 days in a year. Okay, so let's first target point number 1. So can I say ये first of all कौन से component से है? Receivable management component से है. रिसीवेबल मैनेजमेंट कंपोनेंट में भी कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 फैक्टरिंग. ठीक है, सो फैक्टरिंग में पहले आपको इंपॉर्टेंट नोट याद आनी चाहिए कि डेटर्स in factoring questions will not be valued on cost of sales, it will be valued on sales. ठीक है, it will be valued on sales. Okay, our evaluation would be first check अगर हम इन हाउस कलेक्शन करते हैं तो बेनिफिट कितना, और अगर हम फैक्टरिंग सर्विस अवेल करते हैं तो बेनिफिट कितना. ठीक है, देन वी विल चेक कि भाई फैक्टरिंग सर्विस पे जाने से कि क्या ज्यादा कॉस्ट हो रहा है या कम कॉस्ट हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. उसके लिए हमें नेट बेनिफिट का स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा. सो लेट्स प्रिपेयर दैट. There are multiple approaches that can be followed, but I am following my standard approach. फिर मैं दूसरे कौन से approaches है, आंसर एट द एंड सेम ही आएगा. ठीक है, but I will explain at a later stage. Okay, so how much is credit sales? Can I say credit sales is nothing but 200 lakh total sales का 80%. तो 160 lakhs. ये फैक्टरिंग सर्विस अवेल करने से आपका सेल वेल नहीं बढ़ने वाला है. दे आर, अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर नॉट योर सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट, दे आर योर कलेक्शन एजेंट्स. तो सेल तो एज इट इज ही रहेगा. फिर इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे एंड विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बट नो इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल फिक्स्ड इज प्रोवाइडेड. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ दैट
let's consider our credit sales as operating profit only. ठीक है, so operating profit is 160 क्लियर. अब इसमें से we subtract first admin cost. स्टूडेंट्स सोचो, अगर हम इन हाउस कलेक्शन करेंगे तो कहना है इसे 2,40,000 का एडमिन कॉस्ट कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा. सो 2.4 lakh admin cost company has to incur. But if we avail factoring services, ये पूरा कलेक्शन टास्क ही उनको दे दिया है, तो why would we bear admin cost? And on the other hand, question has also specified this can be avoided because factoring are providing that service to us. Factoring will now manage the receivables. So admin cost would be nil if we go for factoring service. Clear? A के बाद B आएगा. B is nothing but bad debts. इन हाउस कलेक्शन करेंगे तो we have to bear a bad debts loss of 1% on credit sales. A credit sales is 160 lakh, उसका 1%, can I say 1.6 lakh company has to bear loss in the form of default in payments, bad debts. Clear? But if we avail factoring services, तो सर उसमें तो दो ऑप्शन है. वी हैव टू चेक द फैक्टरिंग अग्रीमेंट कि क्या फैक्टरिंग अग्रीमेंट रिकोर्स बेसिस पे है या नॉन रिकोर्स बेसिस पे. रिकोर्स बेसिस पे है तो ये 1.6 लाख कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा. आर कंपनी का बर्डन है, हमारी कंपनी का बर्डन है 1.6 लाख. अगर नॉन रिकोर्स बेसिस है तो ये 1.6 lakh will not be incurred by the company. Factor will incur that. Are you following, everyone? So is any type of agreement mentioned in this question? So if question is silent, whether it is recourse or non-recourse, go for the practical world assumption. Practical world assumption क्या है भाई? कलेक्शन का टास्क आपको दे दिया है तो अब आपकी जवाबदारी है सारा पैसा लाना. अगर आप पैसे नहीं ला पा रहे हो, इट इज योर इनएफिशिएंसी. अंडरस्टैंडिंग? सो बैड डेट्स लॉस यू हैव टू बेयर. It is not our responsibility. This is standard assumption in practical world. Okay, so we will follow that standard assumption. It means non-recourse. In absence of specifics in the question, factoring agreement is assumed to be non-recourse agreement. ठीक है? So if we avail factoring services, bad debts loss का burden अब हमारा नहीं है. Understood? Collection cost कुछ भी नहीं है, discounting cost है. C नहीं है but D है, discounting expense. Clear, everyone? So how much would be the discounting expense? Can you all calculate, students? Working note थोड़ा नीचे करता हूं. Working note number 1. Calculation of discounting expense. ठीक है? A total credit sales of the company. Total credit sales of the company. Can I say it is 160 lakhs? उसमें से डिस्काउंट कब मिलेगा? जब कुछ कस्टमर 40 डेज के पहले पेमेंट कर दे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, और कस्टमर्स 40 डेज या उससे पहले पेमेंट नहीं करते, लेट करते, तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा. क्लियर? तो कितने परसेंट ऑफ कस्टमर्स, कहना है 50% ऑफ डेटर्स आर पेइंग ऑन 40th डे. So 50% of credit sales payment received on. So ACP 40 days, ये 40 दिन में आ जाता है. एंड बाकी के 50 डेज का ACP 120 दिन बाद दे सेटल ऑन द लास्ट डे. आर यू फॉलोइंग? ये तो इनको तो कोई डिस्काउंटिंग नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर नॉट पेइंग अर्ली. But can I say 50% means 80 lakh worth of credit sales, worth of debtors will get, how much is the discounting rate? It is 2%. Are you following? So they will get 2% discount. Clear?
So if I go for in-house collection, 80 lakhs into 2%, 1.6 lakh is the discount that I need to bear. A discounting expense है ना, कंपनी को डिस्काउंट देना है, सेल्स की वैल्यू कम होने वाली है, प्रॉफिट कम होगा, एबीसीडी याद करो. सो 1.6 lakh. Clear everyone? Let's just check. This is question 8. 1.6 is correct or not? So discounting expenses company has to bear, but they have not considered over here. But ideally it should come because 40 दिन में अगर if you are making the payment, if you are making the payment on 40 days, so ideally technically it should come. Okay, now let's come to again, if we do in-house, sorry, if we avail factoring service. ठीक है, इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विस, तो पहले तो फैक्टरिंग अग्रीमेंट देखना पड़ेगा. व्हाट इज द क्लॉज रिलेटेड टू डिस्काउंटिंग एक्सपेंस? इज इट ऑन रिकोर्स बेसिस और इज इट ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस? दैट वी नीड टू चेक. ठीक है, अगेन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो माय प्रैक्टिकल ओपिनियन, my practical experience is, if question is silent, then you should write a note at the end about कि आपको रिकोर्स लेना है या नॉन रिकोर्स लेना है. बैड डेट्स के लिए हमने नॉन रिकोर्स लिया है. ठीक है, सो हियर आल्सो वी कैन अज्यूम कि डिस्काउंटिंग एक्सपेंस is on non-recourse basis. But again, what have they done in the solution? Solution में क्या किया है उन्होंने? डिस्काउंटिंग एक्सपेंस को इग्नोर किया. इट मींस दे हैव टेकन 1.6 lakh ओवर ईयर एज वेल. ठीक है, इसलिए इग्नोर किया. आर यू फॉलोइंग? कि डिस्काउंटिंग एक्सपेंस व्हाट हैव दे अज्यूम कि डिस्काउंटिंग एक्सपेंस इन हाउस कलेक्शन करे या फैक्टर कलेक्ट करे, दैट इज कंपनीज बर्डन. So that's why you're not able to see discount expense at the end. Clear as well? Clear all the students? So discounting expense के लिए they have assumed it is on recourse basis. ठीक है, इसलिए वो लिखा नहीं है. Are you following? But I would see this is another view. My view is bad debts is on non-recourse, discount to be on non-recourse basis as well. But again specifically तो आपको agreement का clause ही देखना है. Why are we doing? Why is multiple view coming over here? Because the question is silent. Agreement related कोई information नहीं बताई गई है, इसलिए. ठीक है, so in current question I am assuming discounting expense to be on non-recourse basis. ठीक है, everyone following? हाँ, अब और एक व्यू है. और एक व्यू क्या है? और एक व्यू ऐसा है कि फैक्टरिंग, see just understand. I go to the factor, I tell him collect on my behalf. अब कुछ कस्टमर्स जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो फैक्टर इज कमिंग टू मी एंड आस्किंग, अरे यार ये लोग तो जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर द डिस्काउंट. तो आई विल से हाँ तो दे दो ना डिस्काउंट. तो फैक्टर से भाई हम क्यों डिस्काउंट दे, हमारा क्यों नुकसान करें हम? इफ यू गिव द डिस्काउंट मीन्स यू आर सेइंग बेयर द डिस्काउंटिंग का बर्डन. But why would we bear the discounting का burden? It is your decision ना to give the discount of 2%. कल तो आप उठ के ये बोलोगे कि भाई give 5% discount. तो why should we bear that loss? Understanding everyone? हाँ, बैड डेट्स का भी अग्री कि भाई हमारी गलती, हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से डेटर्स आर नॉट मेकिंग द पेमेंट. But discounting percentage, discounting expense is your personal decision. It is your personal call. अब कल उठ के आप बोलो कि भाई जो अगर 40 दिन में पेमेंट करे और उसको 6% डिस्काउंट दे दो, ये तो हम क्यों हमारा लॉस करें? वी वुड तो वांट कि हम कोई ना डिस्काउंट दे, वी वुड वांट फुल पेमेंट so that we get full commission. Understanding? So for discounting, this argument also comes, and in that case for discounting expense,
वी अज्यूम कि इट इज ऑलवेज ऑन रिकोर्स बेसिस, ठीक है। सो ये भी एक ओपिनियन है विच इज ऑल्सो अ लॉजिकल ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग, बट टेक्निकली you have to read the clause of agreement. Are you following, everyone? So institute has considered this, the last opinion that I gave, the more logical assumption, the fight between the company and factor. Factor is saying, by why should we bear your loss? आप डिस्काउंटिंग देने का डिसीजन ले रहे हो, वो लॉस हमारे बर्डन पे क्यों डाल रहे हो, वो आप ही बेयर करो। Understanding, everyone, it is to be assumed to be on recourse basis. So just to match with institute, we will take discounting expense on recourse basis. It means the burden of discounting expense shall be borne by the company only. Because कल तो कंपनी ऐसा बोलेगी भाई जो 40 दिन में पेमेंट करे उसको 10% डिस्काउंट दे दो, तो लोग तो करने आएंगे, 40 दिन में पेमेंट करने आएंगे, तो 10% डिस्काउंटिंग का रिस्क हम क्यों उठाए, हमारे में से क्यों काट रहे हो आप। अंडरस्टैंडिंग, सो डिस्काउंटिंग एक्सपेंस कैन बी कंसिडर्ड ऑन रिकोर्स बेसिस, ठीक है। हाँ, बैड डेट्स के लिए फैक्टर और अग्रिंग की भाई वो हमारी इनएफिशिएंसी है कि डेटर से कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सो दैट इज अग्रीड नॉन नॉन रिकोर्स, बट डिस्काउंटिंग एक्सपेंस, डिस्काउंटिंग रेट इज योर पर्सनल कॉल, we cannot bear that burden, ठीक है। So institute has taken the more logical aspect, the more practical aspect, but again I am repeating, it depends on clause that is agreed between two parties. So अगर आपको non recourse लेना हो तो ले सकते हो, but last में नोट लिख देना so that सारी clarity हो जाए, clear। So discounting is done, फिर आएगा factoring commission। फैक्टरिंग कमीशन, इफ वी डू इन हाउस कलेक्शन हमें कुछ बेयर नहीं करना है फैक्टरिंग कमीशन, यस और नो। बट इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विस, कैन आई से दे आर चार्जिंग 2% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स दे चार्ज, ठीक है। सो 160 लाख का 2%, ए नॉट ऑन द टोटल सेल, जो कलेक्ट कैश सेल में होने वाला है वो तो हम थोड़ी कलेक्ट करने देंगे, सो इट इज नॉट ऑन टोटल सेल, इट इज ऑन क्रेडिट सेल्स, ठीक है। सो 160 सी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मींस डेटर्स, डेटर्स का जन्म ही कहां से होता है, क्रेडिट सेल्स है तो ही जन्म होता है, कैश सेल्स है तो ये सब करना ही नहीं है, क्लियर। सो डोंट टेक 2% ऑन एनुअल सेल्स, टेक आई टेक इट ऑन क्रेडिट सेल्स, so 3.2 lakh. And factoring is also granting some advance to us, so उसमें भी interest on advance आएगा, clear everyone। अच्छा, discounting expense we calculated using working note number 1, ठीक है। so interest on advance, if we continue with in-house collection, factoring के पास जा ही नहीं रहे तो ये सब interest वगैरह की कोई बात ही नहीं होगी, but yes, if you are availing factoring service and if factoring is granting some advance to you, you have to bear interest on advance as well, ठीक है। so let's calculate interest on advance using working note number 2. Working note 1 was calculation of discounting expense. Working note number 2, calculation of interest on advance granted by factor। तो उसमें स्टेप 1 क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स। बट सर यहाँ पे तो दो तरह के डेटर्स है, कुछ डेटर्स 50% ऑफ द डेटर्स 40 दिन में भर रहे, उनका एसीपी इज 40 डेज, 50% ऑफ डेटर्स 120 डेज में भर रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों वी विल कंसिडर। सो कैन आई से फॉर फर्स्ट 50%, यानी कि वर्थ 80 लाख डेटर्स, worth 80 lakh of sales, credit sales, ACP is 40 days, ये 50% डेटर्स का हो गया काम। Another 50%, can I say their sale value is 80 lakh and their ACP is 120 days, yes or no। so my total debtors is 80 lakh into 40
डिवाइड बाय 360, 8.8888 करेक्ट, प्लस बाकी के 50% आर पेइंग ऑन 120 days, so 80 into 120 divide by 360, 26.6667, and you can take it over here, 8.8889. So can I say my total daters comes to how much lakhs? 26.6667 plus 8.8889. 35.5556 lakh worth of daters. Means this is the amount that is blocked in my daters. I want funding of 35.5556 lakh. So let's check क्या daters का value हमारा correct आया कि नहीं. Yes. Can you see average daters is 35.5556 lakhs. हमने पॉइंट में किया, हमने इन लैक्स लिखा है. दे हैव टेकन एब्सोल्यूट नंबर. ठीक है एवरीवन, दे हैव टेकन weighted average of ACP. At the end they have found कि भाई weighted average ACP is 80 days. But answer यही आया. Either you do by this method or weighted average method, answer would come same for daters. ठीक है. So I am asking to the factor grant me advance of 35.5556 lakh. They are saying no sir wait, हमारा रूल नंबर वन, हमारा उसूल नंबर वन, इसमें से फर्स्ट we will subtract factoring reserve. And how much is the reserve का percentage given in the question? Factoring reserve is, I guess, आ गया यार question 8. Yes, factoring reserve is 10%. A means of 35.5556 lakh, इसका 10%, यानी कि 3.5556 lakh. First, he will subtract the reserve provision for contingency. So I'm asking him, grant me the gross advance of 35.5556 minus 3.5556. Grant me gross advance of 32 lakhs then. He's saying, sir, wait, हमारा उसूल नंबर 2, जो फैक्टरिंग कमीशन बनता है वो पहले काट दिया जाएगा, वो पहले ही वसूला जाएगा. ठीक है. सो फैक्टरिंग कमीशन इज हाउ मच परसेंट गिवन इन द क्वेश्चन? इट इज 2%. So on this 35.5556 lakh, 2% factoring commission would be deducted. 35.5556, oh sorry, 56 का 2%. It means factoring commission of 0.7111 lakh. सर फैक्टरिंग कमीशन तो कुछ ज्यादा आ रहा था. इट इज 3.2 लाख. आपने क्यों 0.7711 अरे 0.711 लाख ही माइनस किया? इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आई हैव एक्सप्लेन, आई टेकिंग द एंटायर टाइमलाइन आई हैव एक्सप्लेन्ड इन रेगुलर एलवीसी. तो इसमें किसी को डाउट है, गो बैक टू रेगुलर एलवीसी, सी द रिकॉर्डिंग एंड देन दिस विल गेट क्लियर. ठीक है, ये सारा शॉर्टकट वे है. वी आर अवॉइडिंग दैट लेंथी टाइमलाइन मेथड. अरे फॉलोइंग, पूरे एक एक महीने का हम नहीं बना रहे, वरना लॉजिक इज पूरे एक एक महीने का टाइमलाइन बनाओ, कैलकुलेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 12. बट वो लॉन्ग कट वे है. वही पूरे लॉजिक को एक वर्किंग नोट में फिट कर दिया है. ठीक है. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ 0.7111 you can please check regular LVC. Okay, so this is net advance granted. हाँ, सो नाउ आई एम आस्किंग कि ठीक है भाई, ये भी काट ले, तू कमीशन भी काट ले, जो काटना है काट ले.
31.2889 lakh to advance there. So he's saying, yes, sir, granted. Take this amount. So can I say my interest on net advance granted would be 31.2889 lakh, and interest rate is, I guess, 18%. Given in the question, yes, 18% is the interest. Okay, so it comes to 5.6320 lakhs. Are you following, everyone? Okay, students, if I want to complicate this question more, can I say हमने मांगा था 35.5556 लाख का फंडिंग, हमको मिला कितना? 31.2889. यस और नो मीन्स हमें कितना फंडिंग नहीं मिला? 3.5556 प्लस 0.7111, 4.267 लाख का हमें फंडिंग नहीं मिला फ्रॉम फैक्टर. तो हमें कहीं और भटकना पड़ेगा. यस और नो, टू अरेंज दैट बैलेंस अमाउंट 4.267 lakh. So in that case, can I say COCD will come as well for 4.267 lakhs? Correct? But COCD rate is not given anywhere in the question. Okay? So again, two views can open up. View number one, if COCD rate is not given, ignore to avoid complication, to avoid complexities. Ignore. But still, if you want to assume some COCD rate, even if it is not given, so we will assume 18%. Why? Because factor is granting 18%. फैक्टर इज ग्रांटिंग एडवांस. एडवांस मीन्स लोन ही ग्रांट कर रहा है 18%. तो बाहर भी दूसरे बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 18% ही इंटरेस्ट मांगेंगे. दिस इज द मार्केट रेट दैट वी कैन अस्यूम. क्लियर? सो इन दैट केस COCD विल बी अप्लाइड not on the full amount, only on the amount that is not funded by the factor. हाँ, if you do in-house collection तो पूरे amount पे आएगा COCD. Clear? But to avoid complications and complexity, let's ignore COCD because even in the solution it is ignored. ठीक है, लास्ट में नोट इसकी भी लिख देंगे. But ideally COCD भी आएगा because this is the funding that we want because amount we cannot afford amount getting blocked in our business. Clear? So if we avail factoring service, तो COCD will only apply on 4.26 lakh. ठीक है? Because total funding we need is 35 lakh, 35.55 lakh. उसमें से फैक्टर ने हमें 31.222889 तो दे दिया. तो अब बैलेंस ही कहीं और से अरेंज करना है, तो बैलेंस अमाउंट पे ही COCD आएगा. क्लियर? बट इफ वी कंटिन्यू विद इन हाउस कलेक्शन, तो फैक्टर के पास तो जा ही नहीं रही है, तो पूरा का पूरा अमाउंट हमें बाहर से ही अरेंज करना पड़ेगा. पूरा का पूरा अमाउंट हमें खुद का ही इधर डालना पड़ेगा. सो COCD विल कम ऑन एंटायर अमाउंट इफ वी गो फॉर इन हाउस कलेक्शन. But since COCD specific rate is not available in the question, we will ignore that. Okay? So can I say my interest is 5.6320 lakh. Interest on advance is 5.6320 lakh. ठीक है? There is no tax rate given in the question, तो जो भी आएगा that would be net benefit after tax. Clear everyone? So net benefit is how much? If we calculate net benefit, it is in-house collection में करें तो 160 lakh minus 2.4 minus 1.6 minus 1.6, 154.4 lakhs. Correct? And if we avail factoring service, so net benefit 160 lakh minus 1.6 minus 3.2 minus 5.6320.
it comes to 149.568 lakh. It means if I avail factoring services, मुझे महंगा पड़ रहा हो, बेनिफिट कम आ रहा है मीन्स महंगा पड़ रहा है, यस और नो, महंगा पड़ रहा है मीन्स नुकसान हो रहा है इफ आई अवेल द फैक्टरिंग सर्विसेज. सो हाउ मच इज माय इफेक्टिव नुकसान इफ आई अवेल द फैक्टरिंग सर्विस? कैन यू टेल मी द डिफरेंस? कितने से महंगा पड़ रहा है? इट इज महंगा पड़िंग फॉर 4.832 lakhs. Are you following? My net benefit is getting dropped by 4.832 lakh if I avail factoring service. So they are asking you what is the effective cost of factoring. So can I say my effective cost of factoring? Effective cost of factoring is 4.832 lakh in rupees. Are you following? But अगर यही चीज परसेंटेज में करनी हो तो कैन आई से इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग in percentage is 4.832 lakhs on the advance that is granted to me by the factor. फैक्टर की सर्विस लेने पे मुझे एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है? 4.832 lakh on the amount of advance that he is granting me to 31.2889. ठीक है, तो डिवाइड बाय 31 सो अगर मैं फैक्टरिंग से फंडिंग लेता हूं, इफ आई अवेल फैक्टरिंग सर्विस एंड इफ आई अवेल एडवांस एज वेल फ्रॉम फैक्टरिंग, तो इफेक्टिव कॉस्ट नुकसान मेरा कितना हो रहा है? 4.832 lakh ऑन 31.2889 lakh into 100, which comes to 31.2889 into 100, 15.44%. Are you following? सर ये 4.832 लाख आपका एक्सेस कॉस्ट कैसे हुआ? सर ये तो नेट बेनिफिट है ना, कॉस्ट से लिंक नहीं हो रहा है. सो फोकस ऑन दिस. कैन आई सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कॉमन फॉर बोथ? यस और नो? इन हाउस करो या अवेल फैक्टरिंग सर्विस करो, 160 lakh विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो कैन आई से दिस इज इररेलेवेंट बिकॉज इट इज कॉमन फॉर बोथ. करेक्ट? So now you just compare the cost between two. Another method now I'm explaining. Just compare the cost. In-house collection जाते हैं, in-house collection करते हैं तो cost would be 2.4 plus 1.6 plus 1.6. यानी कि total cost if I go for in-house collection will be 5.6 lakhs. अगर factoring service avail करता हूं तो can I say my total cost would be 1.6 plus 3.2 plus 5.6320, 10.432. तो कैन आई से इफेक्टिवली फैक्टरिंग मुझे महंगा पड़ रहा है, कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है. कितने से पड़ रही है? 10.432 माइनस 5.6, 4.832 से ही पड़ रही है. आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज ऑल्सो 4.832 ओनली, बट यू आर जस्ट कंपेयरिंग द कॉस्ट. So यहाँ पे this is another method that I took. Net benefit 154.4 था. If we continue in-house collection, वही net benefit is dropping to 149.568 lakh. ये क्यों ड्रॉप हो रहा होगा? बिकॉज कॉस्ट ज्यादा होगी इसलिए, नुकसान ज्यादा हो रहा होगा इसलिए. सो इफेक्टिव नुकसान कॉस्ट कितना हो रहा है? 4.832 lakhs. क्लियर? ऑन द एडवांस ग्रांटेड ऑफ 31.2889. So my effective cost of factoring in percentage is 15.44%. ठीक है? So let's check that. Yes, 15.44%. ओके सर, ये 16.09 भी दिख रहा है, वो क्या है? सी अगेन देयर आर सम फैक्टर्स. यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है पता है? आर फैक्टर इज जस्ट डिडक्टिंग फैक्टरिंग कमीशन एंड ग्रांटिंग अस द एडवांस. बट कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं, उनके तीन असूल है.
यहाँ पे हमने दो असूल देखे। असूल नंबर वन, डिडक्ट फैक्टरिंग रिजर्व। असूल नंबर टू, डिडक्ट फैक्टरिंग कमीशन, एंड द नेट अमाउंट इज ग्रांटेड एज एडवांस। दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम, ठीक है। बट देर आर सम फैक्टर्स जिनके तीन असूल है। असूल नंबर वन, फैक्टरिंग रिजर्व तो माइनस होगा ही होगा। असूल नंबर टू, उसूल नंबर टू, प्रिंसिपल नंबर टू, फैक्टरिंग कमीशन भी डिडक्ट होगा। उसूल नंबर थ्री, I am asking for, okay, grant me 31.2889. But they are saying, no, under usul number three, we will deduct interest on advance granted as well. Interest on advance भी पहले काट दिया जाएगा. And then we will grant you the balance amount. Are you following? But सारे factors ऐसे काम नहीं करते. There are few factors who just deduct factoring commission and grant you net advance. But there are few factors in market जो ब्याज भी पहले काट लेंगे। जैसे गोल्ड गिरवी रख के आप लोन लेते हो ना, तो उसका बाद ब्याज पहले काट देते हैं। स्पेशली द मारवाड़ी पीपल हु आर इनटू गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस एंड हु ग्रांट लोन बाय हाइपोथिकेटिंग द ज्वेलरी, ठीक है। तो उसमें पहले ब्याज पहले काट देते हैं। बट कुछ ज्वेलर्स ऐसे भी होते हैं कि नहीं, ठीक है, ब्याज बाद में भरना। सो वी हैव अज्यूम्ड उस टू उसूल्स वाला प्रिंसिपल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। बट आई सिंपली सजेस्ट, और माय पर्सनल एडवाइस, जब जब दो तीन मेथड इंस्टीट्यूट में दी होती है ना, यू फॉलो द इजिएस्ट वे, the way that you are comfortable with, ठीक है। So because all the methods are accepted, so you follow the way that is you are, the way with which you are comfortable. Are you following? So let's just keep our calculation short to the extent possible and follow only two usul wala principle. Clear everyone? But both are accepted, huh? आप ब्याज भी पहले माइनस कर दो, इट इज फाइन, इट इज वर्केबल। बट लेट्स फॉलो टू द, जहां जहां हम टाइम बचा सकते हैं वहां बचाते हैं। वैसे हमने एआरआर में भी देखा था। आई पर्सनली एडवाइस की गो फॉर फॉर्मूला नंबर वन, एवरेज एनपीएटी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फटाफट हो जाएगा। क्लियर? सो सी, कैन यू सी इफेक्टिव कॉस्ट, बोथ द वेज आर एक्सेप्टेड। हमारा था 15.44, अंडरस्टूड। सी द वे ऑफ सॉल्विंग इज डिफरेंट। इन्होंने सिर्फ कॉस्ट कंपेयर किया है, इन्होंने डिस्काउंटिंग एक्सपेंस भी नहीं लिया है। भाई, बिकॉज दे नो कि भाई इट इज अगेन कॉमन इन बोथ द सिनेरियोस। आप इन हाउस कलेक्शन करो या ना करो, discounting expense will not change. It is your burden only. So they have ignored that as well. Again, that is also a correct view. Are you following? लिखो या ना लिखो, answer would be same. Clear? Everyone? So effective cost of factoring comes to 15.44%. Point number one is done. Point number two में क्या पूछा है? It means अगर हम फैक्टरिंग की सर्विस अवेल करते हैं ना, तो हमें वो कितने में पड़ रही है? 15.44% में पड़ रही है। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू में क्या पूछा है? If bank finance for working capital is available at interest of 14%, will you avail factoring service? ये तो भाई जहां सस्ता मिलेगा, जो सस्ते ब्याज पे हमें फंडिंग करेगा, we will go to that place, yes or no? So if working capital finance is available at 14%, we will not avail factoring service, because factoring service हमें 15.44% में पड़ रहा है। It is costing us 15.44%. So we will go to that location which is cheaper to us. Understood? So that is point number two. So we will not avail factoring service in that case. If bank finance is available at 14%, firm will not avail factoring service because it is effectively costing us 15.44%. Clear everyone? This is point number two. Simple point. Assumption लिख दूं मैं? Assumption, rather calling it as assumption, let me write it, term it as note. Note number one, bad debts assumed to be on non-recourse basis in absence of
specific information. Note number 2, discounting expense. So discounting expense assumed to be on recourse basis. That is, company will bear the loss of discounting, loss due to discount giving. Okay? On assumed to be on recourse basis in absence of specific info. बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहने से अग्रीमेंट देखी जाएगी एंड अग्रीमेंट में भी आइडियली फैक्टरिंग तो यही बोलेगा कि भाई रिकोर्स बेसिस पे रखो वरना हमें नहीं परवड़ेगा. ठीक है. नंबर 3, सीओसीडी इज इग्नोर्ड. सीओसीडी बोलो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बोलो फॉर इन हाउस कलेक्शन इज इग्नोर्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी of its rate. Clear? So these are some specific notes that you should write in the question. Write in your solution so that examiner gets better clarity and they can also judge कि भाई आपको सारे viewpoints, multiple viewpoints पता है. Number 4, effective cost of factoring is calculated without deducting without deduction of interest on advance. मतलब हमने सिर्फ कमीशन पहले डिडक्ट किया है, ब्याज पहले ही नहीं काटा है. ठीक है. तो ये भी नोट लिख दो because this is also accepted. So I hope students today's session was again helpful to all of you. It created some value addition in your life. आपको सारे concepts on management of working capital recollect हो गए, याद आ गए. Any doubts you can send queries to Board of Studies email. You can send on Telegram link. We will try to the best extent possible कि जल्दी से जल्दी आपकी query solve करें. And I wish you all the best for your September 2026 examination. May all of you pass out with flying colors. Thank you. So tech team, let's end today's session. Time is up. Yes.